वो भी टेंटेड हो सकता है। जैसे हम पहले कहते कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मुझे मिलेगा वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं चेन में ऐसे भी लगता है कि जो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मेरा जो आउटपुट टैक्स है वो मेरे रिसिपिएंट के लिए वो भी टेंटेड हो जाएगा, या उसको भी कोई रिस्क है आईटीसी लेने में? कहीं ना कहीं आपको लगता है किसी भी क्लॉज के अंतर्गत सर? नहीं ऐसा कुछ। ठीक ठीक, थैंक यू। एक सर दूसरा प्रश्न है, जो 41 सेक्शन के अंतर्गत सेल्फ असेस्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट हम बात करते हैं, जो पहले प्रोविजनली अवेलेबल था जी। तो सर इनपुट टैक्स क्रेडिट की भी सेल्फ असेसमेंट मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से हम असेसमेंट की बात करते हैं आउटपुट साइड पे जो मेरी लायबिलिटी है टैक्स की असेसमेंट है, क्या हम इनपुट को भी एज पर द लॉ इन योर व्यूज सेल्फ असेसमेंट में माना जा सकता है सर? अगर आप सेक्शन 59 पढ़ें और भारतीय टेलीकॉम की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ें तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है, स्कीम ऑफ द एक्ट इज यू हैव टू कैलकुलेट योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी. You are the only one who has to calculate how much is the ITC available. 17(5) कहाँ किस केस में लगता है. डिपार्टमेंट कैन नॉट प्रोवाइड फॉर दिस. ब्लॉक क्रेडिट कहाँ है, तो क्रेडिट भी आपको खुद देखना है. फॉर एग्जाम्पल, इन केस यू हैव नॉट मेक पेमेंट विद इन 180 days टू द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, तो डिपार्टमेंट तो इसमें पिक्चर में नहीं आता कहीं पे भी, लेकिन आपको तो वो भी क्रेडिट रिवर्स करना है. सो क्रेडिट भी सेल्फ असेस्ड होता है और जो बाकी बैलेंस बचता है उसको हम नेट टैक्स कहते हैं, जिसकी वो पेमेंट करता है. सेक्शन 41 में वो जो बात कर रहा है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो उसने कहा जो प्रोविजनली असेस्ड, प्रोविजनली वर्ड था पहले, क्योंकि पहले स्कीम थी 1, 2, 3. That scheme is being done away with now in this finance bill. The government has considered it is not possible. So rather than there be a communication between the supplier and the recipient, now both supplier and recipient have to address the government revenue. Supplier will file his GSTR1, the government will look at it, and now section 38 is being introduced, and after taking into consideration the provision of that section, they will communicate that credit to the recipient, and that communication will consist of two parts. One, the credit of which is available. Secondly, the credit of which is not available. So self-assessed has always been there. Section 59 self-assessment की बात करता है, उस section में कोई amendment नहीं propose की गई है. The only proposal is with regard to the scheme of availment of ITC. Kindly appreciate that provisions with regard to the ITC are being contained in Chapter 5 of the Finance Act 1994, that is 16 to 21. But what is being suggested is Section 38 and Section 41. Section 16, 2 subsection C, says in case the supplier does not make payment of tax to the revenue, the recipient is not eligible to claim the credit. Same thing has been stated in section 38(2). वहां भी जो 5 सिचुएशन में क्रेडिट आपका रिस्ट्रिक्ट किया गया है और उसमें पावर ली गई है, उसमें भी कंडीशन नंबर 2 ये कहती है कि सप्लायर ने पेमेंट नहीं की. अब आप सेक्शन 41 देखिए, सेक्शन 41(2) भी यही कहता है, अगर सप्लायर ने पेमेंट नहीं की तो आपको रिवर्स करना है क्रेडिट विद इंटरेस्ट, और अगर सप्लायर पेमेंट कर देगा तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा. अब आप ये बताएं, जब टैक्स क्रेडिट के प्रोविजन 16 से 21 में है तो 38 और 41 क्या है? इट इज ए प्रोसीजर. दे से इवन इफ यू आर सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 16(2) रेड विद सेक्शन 17, जो भी आपको क्रेडिट एलिजिबल मिलता है, अभी आपको पता है 1 जनवरी 2022 से क्लॉज 16(2) ऐड हो गई, जिसने ये कहा कि सप्लायर हैज टू furnish the details in GSTR1 and that will be communicated to the recipient in 2B, and then only you will be eligible for the credit. That is a condition supported by the statute. अब उन्होंने, अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने ये भी साथ में कह दिया 37(1) में, subject to such conditions and restrictions you have to furnish the information in GSTR1. और उसी सेक्शन में ये भी कह दिया कि once it is communicated, then that credit is also being available subject to such conditions and restrictions. Even 49(1) में भी जहां सिर्फ कंडीशन वर्ड था, वहां रिस्ट्रिक्शंस ऐड कर दिया.
So the government has made it very clear, पहले तो आपकी एलिजिबिलिटी है 2B की, even that amount of credit which you find that you are eligible to claim can be further restricted by virtue of section 38, यानी जो न्यू रजिस्ट्रेंट है उनके लिए एक पीरियड लगा दिया गया। दूसरा उन्होंने ये कहा कि सप्लायर ने टैक्स नहीं दिया। तीसरा उसने कहा कि सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में 100 रुपए डिक्लेयर किया और 80 रुपए का टैक्स 3 में दिया, तब भी नहीं। फोर्थ उन्होंने ये कहा कि आप क्रेडिट जो यूटिलाइज करेंगे, अगर क्लॉज ए में कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है उसको फॉलो नहीं करेंगे तब भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। और 49(12) में अमेंडमेंट कर दी गई, उसमें ये कहा गया कि जो क्रेडिट लेजर में आपका एलिजिबल क्रेडिट है विदाउट रिस्ट्रिक्शन टू 38, उसका भी कितना परसेंटेज आप यूज कर पाएंगे वो भी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये 38 रेड विद 49 एंड 41 makes it very clear कि जो आपका eligible credit है even that can be restricted. It will very interesting to see कि उनके हाथ में ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग आ गया जिससे वो पता कर लेंगे 38 में कि सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं कराया। अगर उनका पता करने का सिस्टम सिर्फ यही है कि जीएसटीआर 3B नहीं भरा तो उसने टैक्स जमा नहीं कराया, या उसने 3B भरा उसमें कम टैक्स जमा कराया, किस आदमी का टैक्स कम जमा हुआ, मेरी लायबिलिटी 100 रुपए की है, 80 रुपए मैंने क्रेडिट से जमा करा दिए, 20 रुपए मेरे रह गए, तो क्या मेरे सारे रिसिपिएंट का क्रेडिट रोक देंगे? 80 की पेमेंट तो मैं कर चुका हूं ना थ्रू दी सप्लायर। आई डोंट नो, बट वो स्कीम जब आएगी, जब रूल्स आएंगे 38 के, तो पता चलेगा। तो अब आप ये समझ लें कि पहले आपको एलिजिबिलिटी करनी है और वो क्रेडिट जो अदर देन बिजनेस, पर्सनल कंजम्पशन और एग्जम्प्टेड सर्विस में उसको सेग्रीगेट करना है, फिर आपको ब्लॉक क्रेडिट कम करना है, दैट इज योर एलिजिबल क्रेडिट। एलिजिबल क्रेडिट में सप्लायर ने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, इस सेक्शन 41 लाने का चक्कर ये है कि एक महालक्ष्मी कॉटन का केस चल रहा है मुंबई हाई कोर्ट में, जहां उन्होंने ये कहा कि भैया आप उसकी गलती का खामियाजा बायर को क्यों भुगतना चाह रहे हो। तो उन्होंने कहा जी जैसे 180 में किया था, इफ यू सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 16(2) में 180 डेज वाले में तो यही कहा था कि अगर आपने सप्लायर को वैल्यू ऑफ सप्लाई और टैक्स देरान की पेमेंट नहीं की तो आप उस क्रेडिट को रिवर्स करेंगे, पर साथ में ये भी कह दिया था कि आपको उसकी अवेलमेंट का क्रेडिट मिल जाएगा वंस यू विल मेक पेमेंट टू सच सप्लायर फॉर द वैल्यू ऑफ सर्विसेज जीएसटी देरान। सिमिलरली दे वांट टू से कि जो हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि सामने वाले ने टैक्स पे नहीं किया, वो भी सिर्फ उसी पीरियड के लिए है, अगर वो टैक्स पे कर देगा तो हम क्रेडिट दे देंगे। सो द प्रोविजंस ऑफ 16(2)(c व्हिच आर बीइंग चैलेंज्ड इन वेरियस हाई कोर्ट्स, तो उस केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेक्शन 41 को इनेक्ट किया गया। अदरवाइज अगर प्रोविजनल स्कीम खत्म हुई है और आपने सेल्फ असेस टैक्स लिखना है, दैट कुड हैव बीन डन इन सेक्शन 41(1) itself. There was no need to insert subsection 2 in section 41. The only purpose of inserting subsection 2 is to make their case strong. अगर भी आप वैसे भी फाइनेंस बिल की बहुत सारी अमेंडमेंट देखेंगे तो आप देखेंगे वो अमेंडमेंट हुई है रूल्स को स्टैट्यूटरी बैकिंग देने के लिए। फॉर एग्जांपल 86B आप 99% यूज कर सकते हैं, यहाँ स्टैट्यूटरी प्रोविजन है 49 में अमेंडमेंट कर दी। 86A कहाँ प्रोविजन है, आप स्टैट्यूटरी प्रोविजन 49 में फिर अमेंडमेंट कर दी। तो उन्होंने जहां जहां उनको लगता था कि उन्होंने ऐसे रूल नोटिफाई कर दिया, नोटिफिकेशन इश्यू कर दी है, जहां उसकी स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं थी तो वो उन्होंने प्रोवाइड की है। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है इस बजट का। और दूसरा, जहां जहां ये प्रोविजन चैलेंज हुए हैं अपने आपके केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उन्होंने वो प्रोविजन किए। द होल फाइनेंस बिल this 2022 is focusing how to deal with the menace of fake invoicing. उस fake invoicing के चक्कर में they have to strike a balance. Honest taxpayer पे भी ज्यादा प्रेशर नहीं आए. At the same time, people may not be able to avail the fake ITC. Third, जो provision unreasonable है, unreasonableness के basis पे या जो लीगल मैक्सिम है यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एन नेसेसिटी टू डू इम्पॉसिबल टास्क, उसके बेसिस पे वो चैलेंज हो सकते हैं। तो वहां अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए
वहां भी उन्होंने उस प्रोविजंस को ट्रिगर किया है, सो दैट दे कैन शो कि आवर इंटेंशन इज ओनली टू ब्लॉक द फेक क्रेडिट। अगर आप ये देखें 16(2)(c) का सिर्फ एक ही प्रोविजन चैलेंज का जो ग्राउंड है, जो सब रेट पिटिशन में कॉमन है, वो यही है कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ नेसेसिटी टू डू एन इम्पॉसिबल टास्क। बाइंग डीलर shall not be penalized for the fault committed by the selling dealer। और बहुत सारी जजमेंट है इंक्लूडिंग अराइज इंडिया, जहां उन्होंने बायर को दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक जिस आदमी ने जेन्युइनली पेमेंट की, एक जिस आदमी ने सप्लायर के साथ मिलकर कनाइवेंस करके डिफ्रॉड करने की कोशिश की। तो उन्होंने फर्स्ट कैटेगरी वाले को तो आप ब्लॉक नहीं कर सकते। तो ये पूरी स्कीम का सारा जो तामझाम है वो सारा सिर्फ फेक इनवॉइसिंग को हैंडल करने के लिए है। To some extent, trade and industry is liable to be blamed for this। 92,000 crore का fake invoicing है, which is almost a 1 month collection of the government। अभी तो खैर 40 हो गई है, बढ़ गई है, but otherwise is as good as, let us say, if not 8%, 7% of the government collection। It is not a small amount। Then this is also true that all statute need to be reasonable, must satisfy the canon of natural justice, whatever has been stated by the courts in various judgments। तो उसकी restrictions को देखते हुए ये amendment propose की गई है। सर मेरे ख्याल में अभी अगर कोई और क्वेश्चन है तो नहीं तो साथ साथ में भी हम ले लेंगे। तो फॉर्मली स्टार्ट करें। एम खन्ना जी हमारे स्पेशल गेस्ट, जो इनका स्पेशली सर का मेरे को सुबह मैसेज आया, मैं कहा सर इट विल बी अवर प्रिविलेज कि आप यूएस से बैठ के भी हमारा बजट अटेंड कर रहे हो। रादर यू आर द स्पीकर फॉर द नेक्स्ट सेमिनार ऑन ऑन बैंक ऑडिट। तो आई वेलकम यू सर कि आप हमारे साथ जुड़े, और सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। Thank you, Shruti। My greetings to everybody from America। It's early morning, and I wanted to keep awake to see everybody, and I was so happy that I'm here। And my only contribution for this session, without disturbing everybody, and Mr. Batra particularly, who is speaking right now, is that so far as the budget is concerned, what is the need every year to have so many nitty-gritty changes, into the budget? As it is, we have no stability in our laws. And if a country which does not have stability in laws, particularly economic laws, is not going to flourish in the long run, because you do not know where you stand. From a process of learning, we have gone into unlearning, relearning, and now relearning is also becoming unlearning and relearning. So mine is a very, very odd kind of contribution at the moment, and I would love to have the views of all the panelists on this subject, because I've always maintained that there has to be some semblance of stability, not keep on tinkering and bringing in hundreds of changes every year. Other than this, you will find with several notifications and so many other changes that come in. So we are left behind, being very well-equipped professionals. Sometimes we might make mistakes, not recognizing that we've forgotten from the plethora of laws so many provisions that may be relevant for a particular thing and at a particular time. And particularly, there should be no retrospective changes at all. That everything be processed. And small changes for a small amount of increase or decrease in amounts to be received, I think is not fair. So I'm sorry that I have interjected at a very long time. I should give my apologies. No. And please, sir, we are guided by your nice work. Interjected. So go ahead, please. Go ahead. Thank you very much, sir, for joining. सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश जी मेरे ख्याल में आ जाते हैं थोड़ी देर में। राजीव शर्मा जी, देन आशीष जैन जी हमारे पैनलिस्ट में, प्रदीप गोयल जी, एंड देन शशि पाल जी, पंकज जी, देन अश्विनी रंदेव जी, सिद्धांत पाठक जी, वो भी अशोक बत्रा जी के ऑफिस में, बत्रा जी के को एसोसिएट है, देन आयुष अग्रवाल जी, अरविंद ओबराय जी। तो मैं सबका पैनलिस्ट के अलावा जितने इतनी नंबर में, इवन दो सब बजट सुन चुके हैं गुरुजी के मुख से 2-3 बार, इवन 2 क्वेश्चन आंसर सेशन में आप इतने अच्छे नंबर में हमारे साथ जुड़े,
मैं आप सबका चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन की तरफ से स्वागत करता हूं, जो हमने क्वेश्चन आंसर कम डिस्कशन सेशन ही रखा है। वॉइस ऑफ सीए की टीम का जो हमें टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, मास्टर ब्रेन का जो हमें टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट के लिए, सभी मेंबर्स का। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया कि हमारा फर्स्ट सेशन हम अशोक बत्रा जी का करेंगे रिलेटेड टू जीएसटी अमेंडमेंट्स, और अगर आपका कोई क्वेश्चन आंसर है देन सिद्धार्थ जी का। तो मैं अशोक बत्रा जी को वैसे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूं कि जब मैं इन लोगों की बायोडाटा पढ़ता हूं ना, अशोक बत्रा जी का चाहे वो गिरीश उज्जा जी का, तो मेरे को ऐसे लोग अंकल अंकल कहते रहते हैं, तो मेरे को लगता है कि मैं अब यंग हूं कि जिस साल में इन्होंने बीकॉम की, गिरीश जी ने सीए की, उस समय तो हम जन्म हुआ था हमारा 72 में, तो ये तो उस समय बीकॉम कर रहे थे, गिरीश जी ने सीए कर ली थी, तो हम तो यंग ही हुए ना इनके सामने। तो मैं यंग फील करता हूँ। आप उनके लिए अश्वनी, आप उनके लिए बच्चे लगते हो, मेरे लिए तो ग्रैंड चाइल्ड हो। और अशोक बत्रा जी become chartered accountant in 1981. Subsequently did law graduations in 2009. Beside he is alumni of SRCC. हमारे नेक्स्ट स्पीकर भी SRCC से हैं। हमें तो यार एडमिशन बड़ी मुश्किल से लोकल कॉलेज में मिलती थी, ये सब alumni SRCC के हैं। Presently he is the senior partner in AK Batra and Associate, leading firm of the chartered accountants rather in GST and indirect practice in northern India, and has handled many big cases. Batra ji has handled many big cases. He is also author of many books. आप सब देखते ही होंगे कि बत्रा जी की सभी किताबें मैं ही रिलीज करके आता हूँ। इस बार मैं जरा एक दिन जल्दी आ गया, अभी मैं यहाँ से रिलीज करूंगा बत्रा जी की काफी बुक्स आप सबने पढ़ी होंगी। तो इतनी मोटी बुक तो मेरे तो अभी दिखाने लगूं तो आपको शायद लैपटॉप में भी ना आए, तो काफी अच्छे। His books and writings are worth their weight in gold. I must say that. और we are very proud of. Batra ji has written very good books on the GST, earlier on Delhi VAT as well as on service tax, and we are waiting rather आगे होगी सर की बुक on ready reckoner तो आ ही गया होगा। We have already released it day before yesterday. हाँ जी, तो बत्रा जी का आ गया, वो बस मेरे पास भी आने वाला होगा। कल कोरियर किया सब कल आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो और बत्रा जी हैज डिलीवर्ड मोर देन, जब मेरे पास बायोडाटा आया था तो मेरे ख्याल में प्रोफाइल तब तो पता नहीं कितना पुराना है, अब तो मेरे ख्याल में 1500 उस समय थे, अब तो 2500 हो गए होंगे। जैसे मैंने गुरुजी को पिछली बार कहा कि पॉपुलेशन की तरह आपके लेक्चर बढ़ रहे हैं, ऐसे ही अशोक बत्रा जी के भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप तो डेली 4-4, 5-5 लेक्चर जोड़ोगे तो अभी तो पता नहीं 2000 या 2500 हो गए होंगे। तो सर हैज बीन अवार्डेड बाय द NIRC, ICI and then we attached with the many committees of ICI also. हम इन्हें ऐसे ही नहीं GST गुरु कहते। तो I welcome sir and request Ashok Batra ji to kindly start the address and updation on Union Budget provisions amendments on GST. Thank you, Ashwini ji. Honorable respected Shri M.M. Khanna ji, Voice of CA and other organizers who are helping us in hosting this webinar, wherein I am one of the speakers. Now, without wasting any time, we'll come directly to the topic. सबसे पहले मैं खन्ना साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा कि why there are so many amendments in the statutory provisions. Change is the need of the hour. Change is the nature. COVID आया, बड़ी exceptional circumstances थे. Government has to amend certain provisions. Judgments आती हैं, wherein there is some drafting error by the babus of the finance ministry, whereas the intent of the law is something different. The court will always interpret the words which has been written in the law. So to overcome those judgments which are against their intent, they have to change the law. People are becoming very innovative. They are finding out new ways and means to defraud the revenue by
finding out some loopholes in the law. So those loopholes need to be plugged in the larger interest of the economy. Barring that, the priority of the government gets changed. Today, because of COVID, pharma needs certain exemptions, so they want to reduce the rate of tax. And secondly, this GST is a very unique law wherein it is being administered by CGST, IGST, UTGST, and SGST. If you want to bring out any change in the finance bill, unlike income tax, when it is being enacted, those provisions come into force. Here, corresponding amendments have to be made in the State Act, UTGST Act, IGST Act, and thereafter they have to notify it. Sometimes the process is so lengthy because of a huge country, so many SGST Act are there. With the number भी याद नहीं है, 36 है, 37 है, then unit rate tax is also there. तो वहां पे भी सरकार को ये लगता है कि भैया यहाँ तो अमेंडमेंट करनी बड़ी मुश्किल है, कई एक्ट में अमेंड करना पड़ेगा, कई असेंबलीज में जाएगा प्रपोजल पार्लियामेंट के अलावा. तो लास्ट 2-3 साल से जब से जीएसटी आया है तो ये प्रोविजंस में ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं वेयर इन द स्कोप ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज बीइंग इंक्रीज्ड, ताकि वो उस सिचुएशन को नोटिफिकेशन से कर दें. मैं आपको यहाँ कुछ एग्जांपल दूंगा. अगर आप इस फाइनेंस बिल को देखें तो सेक्शन 37 में भी सबसेक्शन 1 में उन्होंने लिखा है कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस, सेक्शन 49 में रिस्ट्रिक्शंस लगाया. और मजे की बात है कि जहां उन्होंने ये कहा कि यू हैव टू फाइल जीएसटीआर 1 sequentially and in case you don't file you will not be allowed to file your another GSTR 1 for the next month. Looking to the fact there can be very genuine difficulties in this difficult time. Particularly, I am an honest dealer, but unfortunately my cash flow is not there. I am not able to file my 3B. So first of all, they used to say that you cannot do it. Now they have put up a proviso also. Of course, they want to make the compliance very, very strict because that is the basis of ITC. And as I told you, the whole purpose is to stop the menace of fake invoicing. But then they have put up the proviso in both the section 37 and 39. And that proviso clearly provides, in case the government feels they can provide relief to a registered person or a class of registered persons. तो एक जीएसटी लॉ में अब एक नई टेंडेंसी आई है जहां डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का स्कोप ये बढ़ाते जा रहे हैं ताकि अमेंडमेंट्स में बार बार करने की जरूरत नहीं पड़े. तो ये सब चेंजेस थी. और टैक्स क्रेडिट के ऊपर आई एम वेरी मच श्योर देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चंस. तो उस टॉपिक को मैं नहीं टच कर रहा हूं. अभी मैं सिर्फ दूसरी चेंजेस बता रहा हूं जो टैक्स क्रेडिट के अलावा आई है. उस क्रेडिट में जाते हैं तो पहली एक चेंज है क्लॉज 100 में. Clause 99 deals with the ITC, which will deal subsequently. Cancellation of registration. Here, they are modifying the procedures by delegated legislation, but statutory provisions remains as it is, which is in conflict with the practices which is followed. For example, in the case of composition dealer, when they drafted the law, he was supposed to file the quarterly return. And in order to ensure that he is doing a proper compliance, they say that your RC can be cancelled in case you don't file your 3 returns consecutively. Now, what they have done, because now the system of filing the quarterly return has been dispensed with, that gentleman, composition dealer, has to file only a yearly return. So this section was in contradiction. So what they stated, they clearly provided that in case you fail to file your return 3 months beyond the due date of filing return of the annual return, which is 30th April of the following financial year, your RC may be cancelled. So this was a necessary amendment in order to fall into the practice which is being followed in real life. You cannot do anything which is against the statutory provision. Now the statutory provision was in contrast. So looking to the fact the composition dealers have been filing the return, they have been paying tax only, they are not claiming the ITC.
So they want to give them a facility to file the annual return. They did it. But at the same time, it requires an amendment of the section. So they did it. Similarly, earlier on, other than the composition dealer, you were supposed to file your returns, and in case you fail to do so, to file your return consecutively for 6 months, your RC was liable to be cancelled. Now the government realized that this 6 months is too long a period. So now they say for such tax period as may be prescribed. Tomorrow they can issue a notification and say, Jindal साहब ने 2 महीने रिटर्न नहीं भरेंगे तो इसका कैंसिल कर देंगे. A particular category of persons will not file return for 3 months, so his RC may be cancelled. So this amendment is being made for that purpose. 34 is a section which deals with issuance of debit and credit note. अगर आप देखें तो वहाँ you can issue the debit or credit note by 30th September of the following financial year. So realizing they are, in the case of companies, tax audit is being done, annual returns, etc. The whole exercise get completed by 30th September or 31st of October, when even your balance sheet is also submitted after tax audit report. So those mistakes must have come to the knowledge of the SSC by 31st October, and 30th September may be the earlier time. So they have postponed that date from 30th September to 30th November. This is with clause 101. 102 deals with the outward supplies. यहाँ उन्होंने कुछ important changes की, जैसे मैंने कहा कि डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया the scheme of 1, 2, 3 cannot go along. Matching of credit invoice wise is not practically possible. Even the technology is not helping them. So they have dispensed with the whole system. So 41, 42, 43, 43A जो 2018 में लाए थे, they were thinking कि will make certain changes in the amendment. वो system ही उन्होंने dispense with कर दिया, तो उसको उन्होंने scrap कर दिया. और 38 और 41 इन सेक्शन को सब्स्टिट्यूट कर दिया. कमिंग टू 37, तो जहां जहां वो रेफरेंस था इन सेक्शंस का, वो सारे हटा दिए गए. 38 सेक्शन वाज सबमिटिंग द इनवर्ड सप्लाईज, यानी ST2, जिसने आज तक हमने भरा ही नहीं. जब से GST आया है ये प्रोविजन कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ. तो सेक्शन 38 को भी उन्होंने अबॉलिश करता. जहां जहां रेफरेंस 38 का था वो भी हटा दिया. तो इन टेक्निकल चेंजेस को मैं नहीं लूंगा, जस्ट टू सेव द टाइम. आई जस्ट गो द सब्सटेंटिव चेंजेस व्हिच हैज बीन मेड देयरइन. नाउ यहाँ भी टाइम लिमिट 30 नवंबर का कर दिया गया, और ये कह दिया गया कि आप GSTR1 सब्सिक्वेंट मंथ का नहीं फाइल कर पाएंगे जब तक आपने GSTR1 of the earlier tax period oblique periods has not been submitted. Now GSTR1 has become the most important document. And देखा जाए तो GSTR1 is the only document where your output tax liability is being calculated, which you have to discharge. And this is the document on the basis of which the information goes to the recipient, on the basis of which he is claiming the credit. So this has become the most sacrosanct document. और उन्होंने ये कह दिया कि 37 में ये जो डिटेल ऑफ आउटपुट सप्लाईज है ये आपको भरनी पड़ेगी मंथ टू मंथ बेसिस सिक्वेंशियली. और कहीं भी अगर आपने एक भी रिटर्न नहीं भरी तो हम आपको GSTR1 नहीं फाइल करने देंगे. And further it has been made a condition for filing 3B also, ताकि अगर आप 3B भी टाइम पे भरते रहेंगे तो सरकार को टैक्स भी मिलता रहेगा. और जैसे मैंने कहा इन्होंने यहाँ प्रोविजन में पावर भी ले ली है और ये कह दिया है कि अगर किसी क्लास को या किसी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस को किसी की रिलीफ की जरूरत होगी तो दैट वी विल सर्टेनली गिव इट टू देम. 38 जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था पहले बिफोर इट वाज फॉर्मली स्टार्टेड, तो मैंने आपको बता दिया था जो GSTR1 होंगे उसकी डिटेल कम्युनिकेट की जाएगी टू द रिसिपिएंट इन ऑटो पॉपुलेटेड फॉर्म व्हिच इज 2B ओनली राइट नाउ. जहां जहां रेफरेंस 42 43 वगैरह का था वो डिलीट कर दिया गया और इन्होंने 2 सबसेक्शन 38(2) इंट्रोड्यूस किया व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जहां उन्होंने कहा कि इवन इफ यू आर एलिजिबल फॉर द क्रेडिट तो वो क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा in the case of new entrant for a specified period, non-payment of tax by the supplier, non-difference in reporting turnover in GSTR 1 and 3 by the supplier,
Then in case he has violated the provision of section 14 and 12, उसके अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज किया, या उसने अपनी जो रिस्ट्रिक्शंस लगी थी न्यू एंट्रेंट वाली उसको फॉलो किया, या सरकार को पावर दे दी गई किसी और कंडीशन में। जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में क्या चेंजेस लाएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस सबसेक्शन वो आपको अवेलेबल क्रेडिट विच इज अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन विल आल्सो बी कम्युनिकेटेड टू यू, and the credit which is not available to you because of the fault committed by the suppliers, that will also be communicated to you. Then comes amendment in section 39. जैसे मैंने कहा टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दिया गया। पहले ये कहा गया कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो पहले 20 तारीख को रिटर्न फाइल करता था वो अब 13 को करेगा। आपको अपने रिटर्न के साथ सेल्फ असेस टैक्स नहीं देना, बल्कि यू कैन पे एनी अमाउंट आल्सो। So that amount was being prescribed under quarterly return monthly payment scheme. जैसे मैं आपसे कह रहा था कि on the ground level they have introduced a scheme for the benefit of small service provider or small suppliers. That scheme is operational, but it was against the statutory provision. क्योंकि आपको in terms of section you have to pay the self-assessed tax, wherein here a predetermined rate, like we all know, he can deposit 35% of the tax मंथली, तो उसको लीगल बेसिस देने के लिए एक ये चेंज लाएगा। देन उन्होंने ये भी कह दिया कि जीएसटीआर 1 नहीं भरा तो आप 3B नहीं फाइल कर सकते। और वी ऑल नो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट फाइलिंग द 3B। इफ वी डोंट फाइल 3B, माय आरसी कैन बी कैंसल्ड, माय ईवे बिल कैन बी सस्पेंडेड। तो ये सारी चेंजेस वो लाए। 41 में जैसे मैंने आपसे कहा स्कीम प्रोविजनल क्रेडिट की स्कीम भी खत्म हो गई, जब प्रोविजनल पेमेंट ही खत्म हो गया, 1 to 3 का स्कीम भी खत्म हो गई। तो अब उन्होंने सबसेक्शन 2 जो लाया ना, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा ये अगर सप्लायर ने टैक्स दे दिया तो आपको क्रेडिट दोबारा मिल जाएगा, और उसका मैकेनिज्म हम रूल से लाएंगे। पर ये लिखना यहाँ भूल गए, जैसे प्रोविजो 180 डेज वाला था तो वहां ये लिख दिया था कि अगर आप जिस मंथ में पेमेंट करेंगे उस मंथ में एलिजिबल क्रेडिट के हो जाएंगे, और 16(4) की जो टाइम लिमिट है वो उसके लिए नहीं एप्लीकेबल होगी। अब ये नहीं पता कि जो सप्लायर पेमेंट करेगा, अगर दैट गोज बियॉन्ड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16(4), then what will happen? My suggestion is everybody who is communicating with the ministry in post budget memorandum must brought out this anomaly to the knowledge of the government, because according to me it is very important that this provision must be made in 16(4) also correspondingly, that in case the supplier makes the payment beyond the period specified in 16(4), you are eligible for the credit. तो सेक्शन 106 में जैसे हमने कहा को 3 क्लॉजेस डिलीट कर दी गई। सेक्शन 47 which deals with the late fee, clause 107, माइनर सा चेंज लाए। पहले लेट फी लगती थी फॉर नॉन फाइलिंग द रिटर्न, बट वहां पे टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की जो रिटर्न है उसका मेंशन करना भूल गए सेक्शन 52 का। नाउ दे से देयर कैन बी ए लेट फी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ टीसीएस रिटर्न आल्सो। देन गुड्स एंड जीएसटी प्रोविजन, आई एम जस्ट गोइंग हरिडली बिकॉज आई एम श्योर everybody of you have already gone through this. 48 is only a technical correction which deals with the goods and services professional. 38 का reference हटा दिया गया because the section has been deleted. 49 में बड़ी important changes आई which deals with the electronic credit and cash ledger. पहले तो उन्होंने ये कह दिया कि जो 49(4) में subject to conditions था और restrictions word भी add कर दिया। 49(10) में cash ledger can be transferred, balance in the cash ledger from one registration to another registration can be made provided both the registration under the same PAN. तीसरा उन्होंने ये कहा कि जो टैक्स लायबिलिटी आप इससे डिस्चार्ज कर सकते हैं 49(12) में वो पावर ले ली, हालांकि उन्होंने पहले रूल बना दिया था 86B जहां 99% की बात थी। Now I am going to tell about some beneficial provisions for this. Mainly it is section 50. Of course, one we are already dealing with. कि कहीं भी जहां कहीं भी मुझे रिटर्न फाइल करनी है उसकी करेक्शन करने का टाइम या क्रेडिट अवेल करने का टाइम 30 सितंबर। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑब्लिक फॉर द मंथ ऑफ सितंबर हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड विद द वर्ड 30th November
ये 16/4 में किया गया जहां टाइम लिमिट क्रेडिट लेने की। ये 37 में किया गया विच इज अ डिटेल ऑफ आउटपुट सप्लाई जीएसटीआर 1। ये 39 में किया गया विच इज अ डिटेल ऑफ फाइलिंग 3B रिटर्न। ये 52 में किया गया विच इज अ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। 50 सेक्शन में 2 अमेंडमेंट आई और दोनों अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1 जुलाई 2017। इस बात को थोड़ा नोट करें, दोनों अमेंडमेंट बेनिफिशियल है और दोनों अमेंडमेंट 1 जुलाई 2017 से रेट्रोस्पेक्टिवली लाई गई है। पहली अमेंडमेंट जो रेट्रोस्पेक्टिवली लाई गई उसमें यह कहा गया कि यू शैल नॉट बी लायबल टू पे द इंटरेस्ट if case you have wrongly availed the credit but you have not utilized the same. So meaning thereby they have followed now various Supreme Court judgment which clearly says that I should be subject to interest whenever there is a loss of liquidity. If I have availed the credit but not utilized it, which has not resulted into any loss of liquidity to the government, certainly there is no question of any interest to them. If this is being done, it will reduce a lot of litigation, of course, from the date when it will be notified. Similarly, when I was availing a credit inadvertently wrongly, then I was liable to pay interest at the rate of 18%. But in terms of subsection 3 of section 50, where that credit was being taken incorrectly due to malified intention, then interest was 24%. Now they propose to reduce this interest also 18% with effect from 1 July 2017. यहाँ मेरे प्रोफेशनल ब्रदर्स को एक वर्ड ऑफ कॉशन और एडवाइस और सजेशन है, जहां जहां भी आपने इंटरेस्ट 24% दिया है अंडर दिस प्रोविजन, क्योंकि ये प्रोविजन 1 जुलाई 2017 से अमेंड हुआ है, तो आपको वो राइट है रिफंड क्लेम करने का। इन माय हम्बल ओपिनियन सेक्शन 54 में जो 2 साल की लिमिट है वो भी यहाँ नहीं लगेगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिवाइड दिस proposition to 2 parts. One, where I have made the interest payment within 2 years from the relevant date, तो वहां तो मैं 54 का एक्सक्यूज लेकर रिफंड मुझे मिल ही जाएगा। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर मान लीजिए मैंने कोई इंटरेस्ट एक्सेस दे दिया 19-20 में, जहां 54 की टाइम लिमिट निकल भी गई है, even we are eligible for that refund because the government was never entitled for that amount. The concept of unjust enrichment also applies to the government. They cannot get themselves enriched at the cost of the public at large. तो जहां कहीं भी ये है, आप अपनी फाइलें खोलिए, अपना दिमाग लगाइए किसके साथ में इंटरेस्ट दिया है, और जहां 24% दिया है वहां आप रिफंड की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लेकिन रिफंड की एप्लीकेशन लगेगी तभी जब ये सेक्शन नोटिफाई होगा। अनलाइक 43A जो आया था 2018 में था, लेकिन आज तक नोटिफाई नहीं हुआ था और डिलीट भी हो गया। तो अगर ये नोटिफाई हो जाता है सेक्शन तो आपको वो मिलेगा। Then there are certain changes in section 54. Of course, that is for the purpose of clarity. जैसे उन्होंने पहले कहा था कि आप अपना कैश लेजर का रिफंड ST3 में ले सकते हैं, ST3 कभी ऑपरेशनल नहीं हुआ, तो उन्होंने कहते हैं इन सच फॉर्म एंड मैनर, maybe they come out with a column in 3B or they do prescribe a form for the claim of refund, so that clarity has come. Secondly, your refund diplomatic missions or various institutions who are listed in UN Immunity and Privileges Act था, उनकी भी टाइम लिमिट 2 साल कर दी गई। तीसरा, relevant date when the supplies have been made to SEZ was not clear, now a specific entry has been made. And finally 5410 में जो credit district होता था, for the refund claimed under section 54(3), that means refund of unutilized ITC. Now that section, the reference to 54(3) has been deleted, meaning thereby अब आपका रिफंड अगर कहीं पे भी है, किसी भी क्लॉज में, चाहे वो 54(1) में है या 10 में है, तो वो विद होल्ड हो सकता है by the proper officer in case there is any demand. Now the question is whether this provision is against the provision of section 107 and 112. ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसको थोड़ा समझेंगे। 107 में कहता है कि once you pay the 10% of the disputed amount of tax, then the whole demand gets stayed.
Similarly, 112 also talk about. So once my demand has been stayed, and if there is a refund, and I have already filed my appeal, can that refund be withheld because my appeal has already been filed? I've got the stay for the rest of the amount. This we have to see when they will notify it, and I think the department need to issue clarifications for this. Otherwise, if 107 में जो प्री डिपॉजिट का एक स्पेसिफाइड परसेंटेज देने के बाद आपको पूरी डिमांड पे स्टे मिलता है, उसका पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। अगर 5410 उस प्रोविजन पे भी लग गया तो फिर कुछ रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हुई है। इंटरेस्ट वाली हमने डील कर ली है। जीएसटी पोर्टल को भी उन्होंने 22 जून 2017 से फॉर्मल पोर्टल कर दिया, क्योंकि सर्टेन प्रोविजंस वर नोटिफाइड फ्रॉम 22 of June लाइक माइग्रेशन एक्सेट्रा। 2 एग्जम्पशंस दी हैं रेट्रोस्पेक्टिव डेट के लिए। आई थिंक वन इज वेरी लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी। फिशिंग मील जब आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें जो अनइंटेंडेड वेस्ट होती है उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया, एक्सेप्ट फिश ऑयल। फिश ऑयल विल बी सब्जेक्ट टू टैक्स। एक अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है which is applicable also, and that is alcoholic liquor fees. हर स्टेट गवर्नमेंट ने लाइसेंस फीस चार्ज करती है in the case of alcoholic liquor for human consumption when that license is given. So one view was that perhaps it is a GST supply liable to be taxed under reverse charge, तो उन्होंने exemption दे दी, अब वो झगड़ा खत्म। एक व्यू ये भी था कि शायद इस पर टैक्स नहीं लगता, but now even if it is this tax is leviable, absolutely no problem, because the exemption has been provided retrospectively with effect from 1st July 2017. तो कहीं भी आपने अल्कोहलिक लिकर के लाइसेंस फी पे जो स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, आपने जीएसटी जमा कराया है, तो भी आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। हाँ जी अश्विनी जी, आए कोई क्वेश्चन? नहीं सर, आप कंटिन्यू करके कंप्लीट कर लीजिए, फिर सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैं तो कंप्लीट कर दिया। चलो, अगर कोई क्वेश्चन है बत्रा जी के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, रिलेटेड टू बजट। तो फिर हम नेक्स्ट सेशन अपना शुरू करेंगे जी सिद्धार्थ जी के साथ। अगर कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज भी कर सकते हैं। एक हैंड रेज है बड़ी देर से, उनको मैं प्रमोट कर रहा हूँ, वो हो नहीं रहे थे। अच्छा, इधर ही है। राजीव जी पूछिए अपना क्वेश्चन। हाँ जी सर, एक एर्स्टवाइल जो अभी प्रेजेंट सेक्शन 41 की सब सेक्शन 2 है, जिसके रिलेटेड कोई केस लॉ भी था, मुझे याद नहीं आ रहा था कि क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड आउटपुट टैक्स एज पर द रिटर्न रेफर टू इन सब सेक्शन। तो उसमें कहीं ये डिसाइड हुआ था कि आप प्री डिपॉजिट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस यूज नहीं कर सकते हैं। उड़ीसा हाईकोर्ट की जजमेंट थी वो, जहां ये कहा गया था कि प्री डिपॉजिट कैन नॉट बी पेड थ्रू टैक्स क्रेडिट, इट हैज टू बी पेड इन कैश। और अब सर वो सेक्शन 41 सब सेक्शन 2 को प्रपोज्ड है कि वो चेंज हो जाएगा, तो अब ये क्लॉज नहीं है, तो ये बेनिफिशियल हो जाएगा? नहीं राजीव जी, वो जो उन्होंने कहा था कि आप टैक्स क्रेडिट नहीं दे सकते, वो इस क्लॉज इस सेक्शन की वजह से नहीं था। क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स and it cannot be used for the payment of interest, penalty, fee or any other sum due under the act. जो सर्विस टैक्स लॉ में था उसमें ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, तो कोर्ट ने कहा कि अब तो आपका क्रेडिट जो है वो सिर्फ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए डिस्चार्ज हो सकता है, जबकि ये जो अपील में आप जा रहे हो, इट इज नॉट आउटपुट टैक्स, इट इज अ डिमांड प्रपोज्ड अगेंस्ट यू, so you cannot use the credit. Whether that is a good judgment or bad judgment, I am not sure about it, but in any case these provisions are being challenged. जो past activity थी वहाँ एक्साइज में भी और सर्विस टैक्स में भी प्री डिपॉजिट के लिए क्रेडिट का यूज परमिसेबल था। इस अमेंडमेंट का उस कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है जी। यहाँ सेक्शन 41 में उन्होंने ये कहा कि जो जीएसटीआर 1 है उसको हम आपको प्रोविजनली फाइनली असेस करके आपके क्रेडिट में दे देंगे, यानी 2B में दे देंगे, सेल्फ जनरेटेड ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट में 2B में आ जाएगा। और 42(1)(2) में ये कहा कि अगर सप्लायर ने पेमेंट नहीं की फॉर स्पेसिफाइड पीरियड तो आपको क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, बट यस इफ द सप्लायर मेक्स पेमेंट ऑफ टैक्स टू दिस revenue, then you will be eligible to reclaim the credit. The only thing they forgot to mention is
this provision is similar to this second provision to section 16(2), जो ये कहता था कि अगर सप्लायर को आपने वैल्यू ऑफ सर्विस और टैक्स की पेमेंट नहीं की विद इन 180 डेज तो आपको क्रेडिट रिवर्स करना है और ये क्रेडिट आपको ले लेना है दोबारा जब आप उसको पेमेंट कर देंगे। और 16(4) की जो टाइम लिमिट थी, जिसको अब 30 सितंबर से उन्होंने 30 नवंबर कर दिया, जो टाइम लिमिट थी वो टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होगी। यहाँ इन्होंने गलती क्या की, इन्होंने ये प्रोवाइड करना भूल गए कि जैसे 16(2) प्रोविजन में 16(4) की टाइम लिमिट नहीं होती, अगर सप्लायर उस टाइम लिमिट के बाद भी पेमेंट कर देता है तो इन दैट केस आल्सो यू शैल बी एलिजिबल टू क्लेम द क्रेडिट। Batra ji, I have a very fundamental question. MM Khanna here. Sir. A very odd maybe question to you. You see, there are, in case of professionals who are on cash method of accounting, they are bound to raise their bills as soon as they've rendered a service. And what happens is that they need to pay the amount of GST whether or not the amount has been collected. Absolutely. Mostly professionals are on cash basis. Now, what has happened is because of the insolvency proceedings, many of the companies go into liquidation. It takes a year's time, maybe a couple of months time before they come to know anything. They have already deposited the tax. They don't know whether the company will be liquidated or not liquidated, whether they'll get the money in liquidation or they will get nothing. Now, there may be cases where the company has gone into liquidation and there is no relief and no money paid to the professionals who have raised the bill and paid the GST. Now, what happens to the GST paid by them for monies which they have not received because they are paid on mercantile basis so far as the government is concerned, and on cash basis they receive nothing? So how to set off that amount is something that needs to be considered, isn't it? Yeah, absolutely, you're correct. It is a cost to you, but this is not a new concept. If you look at the pre-GST era also, a trader is selling goods to a customer. He is paying the tax in the month in which the sale is being made, and subsequently he is not able to recover that amount because of insolvency or any other reason. Then that amount is being allowed as a bad debt, which is a deduction from calculating your taxable income. But the sale tax which you have paid is a loss to you. Same practice is being followed in excise also. Similar practice is being carried out in GST also. They say, देखिए ये लॉ को कॉम्प्लिकेट तो हम ही करते हैं खन्ना साहब। अगर आप इसकी बैकग्राउंड में जाएंगे तो पहले सर्विस टैक्स सिर्फ कैश बेसिस पे लगता था। 1 अप्रैल 2011 को प्रोविजनली इन्होंने ऑप्शनल कर दिया मर्केंटाइल को, 1 जुलाई 2011 से मैंडेटरी कर दिया। इस प्रोविजन को मिसयूज किया गया। कंपनी ए ने एक सर्विस प्रोवाइड की 100 करोड़ रुपए की, कंपनी बी ने उस सर्विस को उसकी पेमेंट कर दी। तो पेमेंट करने की बजाय उसने उस कंपनी को 100 करोड़ का लोन दे दिया। तो जब जीएसटी वाला सर्विस टैक्स वाला टैक्स मांगा, बोला टैक्स इस बात का भी तो डेटर खड़ा ही है, एक तरफ लायबिलिटी है एक तरफ डेटर है। तो उन्होंने कहा डेटर तो आपका लोन है, बोले कि सिर्फ पैसे आएंगे तभी तो देंगे ना, आपने खुद कहा जब तक कैश। तो गवर्नमेंट वाज कंपेल्ड, इस तरह से अगर प्रोविजन मिसयूज होंगे तो व्हाट विल यू डू। तो अब ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है और ये प्रोविजन रेस्ट वाइज लॉ में कई बार चैलेंज हुए। तो गवर्नमेंट ने कहा दे आर वेरी जस्ट एंड इक्विटेबल। Once you are doing a business, you are taking a risk. You are taking a risk for the recovery also. In case you are losing your money, we are not saying you can recollect the tax, because that is a total loss made by you against your probable income, and that we are allowing you as a deduction while computing your taxable income. Then where we are unjustified. So that provisions had to be absolutely as per the provisions of law. उनको struck down नहीं किया गया on the basis of unreasonableness. तो उसी legacy को इन्होंने GST में भी चला दिया। I understand. So far as the adjustment of that is concerned, under GST law, it cannot be adjusted out of the further collection. That means, जो आपने pay कर दिया। They have divided this, खटा साहब, मैं disturb कर रहा हूँ, दो हिस्सों में किया। एक तो ये है कि मैंने सर्विस दी, उसकी कोई डेफिशिएंसी रह गई, मैंने 100 रुपए की सर्विस दी, मुझे 80 रुपए मिले, तो वहां तो उन्होंने कहा जी आप क्रेडिट नोट दे सकते हैं। उसके लिए भी टाइम लिमिट रख दी, जैसे मैं अभी कह रहा था कि टाइम लिमिट वो सितंबर से नवंबर कर दी, बट टाइम लिमिट इज देयर। एक बैड डेट है
दूसरा इसका रीजन है, अगर आप इसको जोड़ के देखें गुड्स के साथ तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रोविजन इतना अनजस्टिफाइड नहीं है। मैंने एक गाड़ी खरीदी नहीं, 50 लाख की गाड़ी थी, उसमें 25 लाख रुपया जीएसटी था, 75 लाख आई पे। I took that car and came out on the road. I went to the temple to thank me the Almighty for giving me this luxury car. But when I came out to my utter surprise, the car was gone. Now I filed an insurance claim, and in that insurance claim, how much amount I am likely to get? 50 lakh or 75 lakh? 75 lakh. So once that money is being borne by the insurance company, I cannot say that you allow me this credit also and then dual benefit and then expense also. So the government, in their own wisdom, looking to the overall scenario, they said you are service provider, you are taking a risk in case the money goes off, you are not able to recover, then you are not losing only the value of service, you are losing the GST also, which you have paid out of your pocket. Maybe unreasonable provision, but it has never been struck down by the court treating it as unreasonable. The basic issue is the GST by itself does not give me the benefit. वो तो tax reduction तो मैं ले ही लूँगा. हाँ जी. That is, isn't it? हाँ जी. So GST, अगर GST का GST में ही complete हो जाता है कि जो further amounts आते हैं उसके against adjust हो जाए, that means GST law is taking care of that. Self It is not adjustment taking you to the income tax. जी. You're absolutely right. Right. Thank you. Thank you very much, sir. Now, Batra ji, आप हमारे साथ जुड़े हुए रह सकते हैं, sir. Thank you very much for the nice and wonderful talk on the union budget. अगर आपकी कोई आगे engagement है तो sir, as per your wish, sir. मैं थोड़ा सा मुझे काम करना है और मुझे no problem, sir. कल 10:30 बजे एक नेशनल सेमिनार है, वहाँ पे भी बोलना है. So I have to do complete couple of things. I will be taking leave from Siddharth ji. Siddharth, really, I love to listen to you, but unfortunately, I had certain things to do. So I'll be leaving the webinar right now. इनकी तारीफ सुन जाइए, इनकी जुल्फें जो नजर आती हैं जितनी बड़ी, उतनी ही बड़ी और डेप्थ इनकी नॉलेज है. तो ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि फोन भी कम उठाते हैं. तो आज इनको हमने पकड़ लिया. तो ये डबल इंजन की सरकार की तरह हम इनको डबल इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं. मैंने अपना इंट्रोड्यूस कर दिया. अभी I will request Gaurav Gupta ji to formally introduce Siddharth ji. गौरव जी, आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही आपकी. नहीं आ रही. गौरव जी, हेलो. चलो जितनी देर में गौरव जी अब क्लियर है. अब नहीं, इको आ रही है. नहीं, चलो जब सॉरी फॉर हाँ जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन सर. एक्चुअली सम टेक्निकल इशू हैपेंड. मैं सिद्धार्थ जी के बारे में कह रहा था कि वो हमारे बड़े भाई, मेंटर और हर चीज में सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो फेमा का इशू हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स का इशू हो, हमेशा अवेलेबल रहते हैं. और जब कभी भी उनको फिजिकली भी देखने का मौका मिला है तो सर आपकी वाली बात क्लियर होती चली जा रही है कि उनकी नॉलेज उनकी जुल्फों की तरह आपस में मेल खाते चली जा रही है धीरे धीरे. और टू स्टार्ट विद द फॉर्मल डेलिब्रेशन, FCS सिद्धार्थ जी हमारे बड़े भाई graduated from SRCC Delhi University and later on qualified his chartered accountancy in 2001 while being placed on merit list of rankers in intermediate as well as in final exams. He is a law graduate from Delhi University and is specializing in direct taxes and is a regular faculty with ICI and other professional bodies. He has delivered more than 500 lectures on various topics of professional interest across various branches, study circle, tax bar association, etc. on various topics under Income Tax Act, such as issues in assessments and reassessments, tax audit, practice and procedure in appeals, penalties and prosecution, taxation of cash credits, deemed dividends, Section 14A,
taxation of business profits, MAT, taxation of trusts, societies, income declaration schemes, appeals, survey, search, and what not, including ICDS also. He is a visiting faculty to National Academy of Direct Tax, Nagpur, as well as Regional Training Institute of Income Tax Department, Ministry of Finance, Government of India. He remained a special invitee at Direct Tax Committee for ICI of Chartered Accountants of India for financial year 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 15-16, 16-17, and 17-18 too. He was a part of the committee formed by ICI for revision of guidance note on tax audit under section 44AB of the Act and of ICI publications on ICDS. He was also a special invitee at the Tax Advisory Committee for the ICI during financial year 2021. Presently, he is being consulted by various professional business houses on nuances of direct tax, Benami, black money, FEMA enforcement laws, and any other assistance also. So with this, I present before you my dear brother C.S. Siddharth Jain ji. Thank you so much. इसमें एक और ऐड कर दूं, जितनी भी मैं आपको अपडेट देता हूं ना रिलेटेड टू डेट एक्सटेंशन और अमेंडमेंट में, इसमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन में काफी हद तक इनका भी रोल होता है कि ये बताते हैं कि जी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन क्या आई है रिलेटेड टू डेट चेंज और एटसेट्रा मेनी थिंग्स. और आज का हालांकि हमने सेक्शन जो सेशन है सॉरी वो हमने रखा था क्वेश्चन आंसर वे पे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिद्धार्थ जी से कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चेंजेस आई हैं, चाहे वो सर्वे प्रोविजंस के रिलेटेड डाउट है कि जी वो डाउन द लाइन डिपार्टमेंट के पास पावर वापस आ गई, देन वो अपडेटेड रिटर्न वेदर इट इज ए रिवाइज रिटर्न और नोट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में, तो पहले एक बार जितनी भी प्रोविजंस हैं उसके ऊपर डेलिवरेट करें. उसके बाद हम फिर अगर बीच में होगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वन टॉपिक तो आप क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, नहीं तो एट द एंड वी विल टेक ऑल द क्वेश्चन आंसर. कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं, पूरे कवर करके जाएंगे. सिद्धार्थ जी, ओवर टू सिद्धार्थ जी. थैंक यू अश्विनी भाई, थैंक यू गौरव जी, एंड my salutations to the senior doyen from the profession, Mr. M.M. Khanna. Despite being such an elderly, you know, the quest of knowledge in the sir is visible from the fact that it would be the wee hours of the morning in the East Coast in case he is there at the East Coast, and still later wee hours in case he is at the West Coast in US and is still there for the continuing quest of knowledge. So the hats off to you, sir. And first of all, before deliberating on the provisions pertaining to income tax, you know, I saw a query from sir who is like a doyen and godfatherly and grandfatherly image to all of us as to what why there is not a certainty on the tax provisions. Am I right, sir? This was your query, sir. My learned esteemed speaker, co-speaker, GST Guru Shri Ashok Batra ji, I tried to address it, and taking it further, you know, sir, your query is certainly based on one of the four principles of, you know, propounded by Adam Smith, the famous economist, in his book Wealth of Nation. You know, this book happens to be Makkah, Medina, or the Bible to every student of economics. There he said that efficiency, certainty is one of the cornerstone of any tax regime. But, you know, having said so, why the need for, you know, changes arise? The changes arises to a legislature to provide more certainty in the tax laws to the assessees at large, to the taxpayers, and also to curb the menace of tax evasion, which might have unintendedly crept in either by virtue of some drafting lacuna or by virtue of some judicial interpretation. So, in my humble and little knowledge, sir, these are the basic two tangents on which, you know, the tax laws, they get updated, they get changed. And, you know, it's a continuing process, sir. Even when we are deliberating today, you know, there might be some judgment which may have come and which might have future or a glaring repercussion. So that's about the certainty, and that's about my understanding as to why, you know, this certainty could not be achieved to a 100% extent. Obviously, you know, there is this manifestation of the present government to ensure certainty to the extent possible, not to adhere to retrospective amendments, except where there are, you know, anti-abuse provisions for which retrospectivity may be warranted, so as to avoid discrimination amongst the taxpayers or from one class of the assessee to the other class of the assessee. But of late we have been seeing, Gauravji, that the present government is trying to not being retrospective, and it is trying to mitigate, you know, even all those issues
Neha Agarwal ji, Voice of Chartered Accountant, our technology partners, she's there. I welcome you, ma'am. So the thrust of the present government is to avoid retrospectivity in the letter and spirit, except to the extent discussed. Now, adverting to the provisions pertaining, in case you wish to add something, sir, it would be like a guidance to me. MM Khanna, sir, in case you wish to add something from what I said. My only issue is that where poor drafting and bad drafting of a law results in several changes and notifications, so why was the law not properly drafted at the first stage? I am not comparing too much, but look at the laws drafted by the British and which were left in India. How many changes have come about in those? At best, only interpretations by courts have come in. Here, you look at GST, for instance, says this introduction. Why did you bring in certain clauses? Why are you changing the rates now and then? You may be justified that the one particular section needs relief, another section does not need relief from time to time based on the conditions, as Mr. Batra explained. It is justified from the angle of the government, but look at the angle of the businessman. Look at it from the angle of the professional. You are supposed to keep yourself abreast of the law every now and then. And if you find notifications coming every month and every 2 months, how are you going to keep abreast of the law? You might be making a genuine mistake and paying for it. So it is not that you intend to flout the law. Question is, if 1 or 2% flout the law and there are minor changes, do not alter the law to take care of all the 98% or 99% who are otherwise tax compliant. The idea is tax compliance, show cooperation, let people be giving their money. How many loopholes there have been because of which frauds have taken place in GST, for instance? You don't see frauds running into lakhs. You see frauds running into crores as put out in the press. My issue is, why are the laws not being drafted absolutely with full thoughtfulness, okay, and not subjected to too many changes or clarifications, etc. That is my issue on the drafting of law. I'm not on anything else. If there is a circumstance which has changed, like COVID, yes, you do it. But to say that I have drafted a law badly and therefore I'm coming to this, or because the court is interpreting in a different way and my thinking is different and I want more revenue, that is not acceptable. That is my fundamental thing, because that shows a level of cooperation between the profession, the business, and the government. See, we all want to be tax compliant. We all want to have our sleep in peace. So that was the only issue. Because, as I said, from a process of learning to unlearning to relearning, and again unlearning of the relearning. It's too much for the profession. You see, unfortunately, you see what happens. The businessman is not worried many a time. The professionals are as to whether the date is being extended or not, whether the portals are working or not. Is this not really putting a spoke in the wheel of the normal smooth working of the economic laws? My issue is, let there not be too many amendments, changes, notifications. Let that be reduced to a bare minimum. If some people have taken advantage of the law, don't worry. You can do it, at one stroke later. But in the garb of simplification, there is more complication. That is my issue. That was the only difficulty and the angle that I wanted to bring out to. I'm sorry, it's an overall, thing, but I think it's a rather relevant thing. We are all lost in the maze of laws. But thank you very much for your inputs. What you said, and even this year, taking it forward from where you left, there are technical drafting errors which I'll be discussing during the course of my deliberation with the panelists as well as with the attendees. And as good as there are more than 20 drafting errors which have been so far identified by yours truly, me only, and they seem to have a long-term repercussions on the bona fide taxpayer also, and perhaps on the face of it they appear to be bona fide, but anyway they have crept in. Number one. Number two, they are rightly said by you, so far as the drafting lacunas are concerned, yes,
there should be a committee, there should be some kind of a mechanism to continuously and consistently to monitor the relevant provisions and as to whether they are amenable or they are capable of being, interpreted differently from the manner or intention at which these were inserted. But anyhow, I mean, these could not see the light of day, such like provisions, unless and until, the coveted professionals are taken on board and, their experience hands-on to are not taken or solicited. Most of the times, Ashwini ji, we know that officers who draft, the provisions of the finance bill, these officers for their entire, tenure or for the substantial part of their tenure, sir, you will appreciate, they remain posted with the TPL department itself. So, at many of the times, what they do is or either based on the judgments which have come or based on the hearsay from one person or the other, or from the internal references from the other officers of the department. I mean, so far as income tax is concerned, since I don't do GST, I don't know GST, it's very difficult for me to comment upon GST. But so far as income tax is concerned, yes, it is fact that these officers remain posted with TPL. And therefore, being most respectful to them, at times this seems to or appears to miss slightly the ground realities of the provisions. And even though their intention is correct, but unintendedly, the drafting errors, they creep in. So yes, obviously, but the change, as we say, it's the afflux of life, or badlav har cheez mein zaruri hai, sir. So 98-99%, certainty is there, but for 1%, 2%, even if there is a drafting error, let's say, and the tax evader has taken a benefit, it needs to be plugged into, it needs to be brought down, because otherwise what would happen is a bona fide taxpayer would feel himself discriminated, which would be against the spirit of Article 14 and 19 of the Constitution. So, I mean, let's not get into this too much, sir. I hope, what you intended to say and what you intended to, me to clarify or the other co-speaker to clarify, that has, been conveyed to you in the best of the spirits and in the most pleasing words. And let's come back to the topic, because, on the face of it, the Finance Bill 2022, it appears very small. Ashwini ji, बहुत छोटा सा दिखता है Finance Bill, direct tax proposals. और जैसे पितामह गिरीश जी ने समझाया, तो 1-1.5 घंटे के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ नहीं है, बट मानिए सर की पिक्चर बहुत बाकी है और डब्बे में बहुत सामान है. So let's with the permission of Ashwini ji, should I go clause by clause, or should I touch upon the cornerstones of those issues which are very glaring firstly, and then we can take the queries. तो जैसा ऐसे कर सकते हैं, जैसे जो मेन प्रोविजन है ना, चाहे वो सर्वे वाली है, चाहे वो चैरिटेबल वाली है, चाहे वो अपडेटेड रिटर्न वाली है, मेरे ख्याल में पहले वो करके उसके बाद रिमेनिंग जो क्लोजेस है क्लोज बाय क्लोज वो कर लें, देन क्वेश्चन. Right, sir. Okay. So let's start by the most hottest of the topics, taxation of virtual digital assets. Now, before I discuss this virtual digital assets with the attendees, I'll start by saying कि सर 6 महीने पहले तक तो मुझे भी नहीं पता था क्रिप्टो and that was it. Ethereum, Bitcoin, this and that, and if anybody would put a ball to me, it was a bouncer to me. 6 महीने पहले मेरा माइनर सन जो है वो मेरे पास आया और मुझे बोला कि $10 के इक्विवेलेंट पैसे मुझे दे दो, एंड आई इंटेंड टू इन्वेस्ट इन डिजिटल करेंसी. तो मैंने कहा तू पागल हो गया यार, लेट यू बिकम मेजर एंड देन यू कैन स्टार्ट, अदरवाइज तेरी अगर इनकम हुई तो लॉस की तो मुझे चिंता नहीं है, बट मैं तो हाईएस्ट टैक्स स्लैब के अंदर हूँ और तेरी इनकम हुई तो मेरी इनकम में क्लब हो जाएगी, और वो जो टैक्स का जो पैसा है तेरा वो मुझे तुझे रिम्बर्स एनीवे करना पड़ेगा. So I mean that was on a lighter note, but yes, I threadbarely then went through what is cryptocurrency, what is digital virtual assets, and I'll start by saying, sir, the menace of the cryptocurrency or the virtual digital asset that started way back in 2012. क्या हुआ सर कि globally एक organization है G20, India is part and parcel of G20, it's a signatory of OECD. और G20 ने सर 2012 के अंदर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को एप्रीहेंड करते हुए, अश्विनी जी, 2012 के अंदर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को एप्रीहेंड करते हुए FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी एक डिटेल स्टडी निकाली अपने मेंबर नेशंस के लिए. एंड दिस FATF इज द ग्लोबल बॉडी फॉर ensuring standards which
which could combat AML, that is anti-money laundering, and CFT, counterfeiting terrorism. So FATF is the global, leader for AML and CFT standards. They came out with their white paper on digital virtual currencies, and thereafter every year since then it has been updated. तो सर सबसे पहले डेफिनेशन की अगर अपनी बात करें, इस करंट फाइनेंस बिल के अंदर 4 ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को रेफर किया गया है। 4 सर। सेक्शन 257 कैपिटल A, which pertains to the definition of virtual digital asset. Second, section 56(2)(10) amendments have been made to include virtual digital assets as movable assets. Section 115 BBH, which talks about taxation, special regime for taxation of profit, income from transfer of virtual digital assets. And then lastly, section 194S, providing deduction of tax at source with respect to transfer of virtual digital assets. Now, the beauty of the definition, section 257 capital A, it lies in the definition and it says virtual digital asset is any information, code, number or token which is stored electronically, generated through cryptographic means, excluding the Indian currency or the foreign currency, with value, without value, which can be transferred digitally through electronic means. And then they have included the non-fungitive tokens in the definition of virtual digital assets. And lastly, the central government has assumed power to notify any other asset as virtual digital asset. So this is the small and simple definition. Today morning I was speaking to somebody from the revenue, and I was saying, sir, कि ये क्या आपने सरलता के लिए definition को जो है वो refer किया है या complexity के लिए किया है? Why did not you embrace the definition which is provided by OECD in FATF write-ups on virtual digital assets? So they said कि sir नहीं, अपने को क्या है कि it is an and we wished that to increase the scope of virtual digital assets, we had to provide for taxation of the same. So, chaliye sir, this is the definition of the virtual digital asset. Now, what has been amended in section 56 subsection 210? Section 56 subsection 210 provides that income from non-relative on account of gifts from non-relative or on account of transfer of the movable assets, certain movable assets for a value which is less than the fair market value shall be deemed income from other sources in the hands of whom? Recipient. Am I right, sir? Right. चलिए, तो वहां क्या किया गया है सर? 56(2)(10) के अंदर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है और मूवेबल एसेट की, मूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है उसके साथ टैग डाउन कर दिया गया है. नाउ व्हाट डज दिस मीन? This means कि नेहा जी, who is organizing this seminar, in case she transfers her virtual digital asset to me, and I being a non-relative, the fair market value of the virtual digital asset so transferred will be my deemed income under section 56(2)(10) of the Income Tax Act. अब इसमें एक सवाल ही आता है सर, जब आप सेक्शन 115 BBH पर आते हैं, which is the specific section for taxation of the profit arising from transfer of virtual digital asset, the section reads something like this, 115 BBH, where the total income of an assessee includes income arising from transfer of virtual digital asset, the tax shall be computed in the following manner. Subsection 1 clause I, on at the rate 30% on the income from transfer of the virtual digital asset, and II, balance tax on the remaining income in accordance with the other provisions of the law. तो सर 30% टैक्स वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर के ऊपर है. Fortunately or unfortunately, they have not included the expression virtual digital asset, any income arising on account of transfer of virtual digital assets as deemed income under section 224 of the Act, but there is a specific regime for taxation which appears to be well in order. अब इसमें सर 3-4 facets हैं जो अलग-अलग निकल कर आते हैं. One, the question is whether in case I transacted in 2 virtual digital assets, whether I'll be able to claim the set off of profit from one digital asset
to the loss incurred by me on account of transfer of the other digital asset. Will it be possible for me? We'll discuss it. The second, let's first understand the provisions. Then section 115 BBH subsection 2 provides that no profit while computing the income from transfer of virtual digital asset, no allowance of any expenditure or loss within bracket except cost of acquisition of the virtual digital asset would be provided. 115 BBH subsection 2 clause B says that the assessee shall not be eligible to claim carry forward or set off of loss on account of transfer of virtual digital asset from any other income under any other head of income. तो सर सबसेक्शन 1 क्या कहता है, सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए क्या कहता है? वो कहता है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो उसके अगेंस्ट मुझे कोई एक्सपेंस नहीं मिलेगा और उसके अगेंस्ट सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिलेगी और उसका लॉस की सेट ऑफ नहीं मिलेगी, लॉस की सेट ऑफ नहीं मिलेगी। तो एपरेंटली इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि दूसरा वर्चुअल डिजिटल एसेट अगर मैंने ईयर ट्रांसफर किया तो उसके लॉस की सेट ऑफ मुझे नहीं मिलेगी प्रॉफिट से। बट सबसेक्शन 2 क्लॉज बी क्या कहता है? वो ये कहता है कि कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट नहीं मिलेगा और सेट ऑफ लॉस फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम नहीं मिलेगा। तो एपरेंटली ये लगता है सर कि सबसेक्शन 2 क्लॉज ए एंड सबसेक्शन 2 क्लॉज बी of section 115 BBH, they are not in conformity and they are at wide variance to one another. तो एक सवाल तो सर ये, अब कल मैं कहीं सेमिनार में था, I am seeing the chat box, somebody is written voice is too low, please check. I hope I am audible, Neha ji. Okay, so yesterday I was in another seminar, somebody raised a very valid point. He said, Mr. Jain, today most of the youngsters, they are investors or they are traders in virtual digital assets, cryptocurrencies में डील कर रहे हैं और उनके कोई और sources of income नहीं है। तो उनके केस में, in case of any other assessee, any assessee who has got income only in the nature of income from transfer of virtual digital asset and there is no other income and the total income is below the maximum amount not chargeable to tax or is less than 5 lakh rupees, whether the tax of 30% would still be charged in their hands or not. So yes, I think this is one food for thought and the ministry must come out with some kind of a clarification on this. Another problem arises. If we look at the global standards on taxation of the virtual digital assets vis-a-vis the developed countries and the other developing countries, that is Canada, US, France, Italy, Australia, Japan. You know, sir, most of these countries, including Germany, most of these countries, they have already, though not statutorily recognized the virtual digital assets, but they have legislation for taxation of the income from virtual digital assets. Canada, if you ask about Canada, you know, the Canadian IRS, the income tax authorities in Canada, an assessee can classify the income into two heads. A, the business income based on, you know, the frequency of the transactions, and B, capital gains based on whether he is an investor in the cryptocurrency. Similarly, in the US, there is a form, US IRS form pertaining to the gains from transfer of assets, where the gains arising from transfer of virtual digital assets have to be stated in the income tax return, number one. Number two, the US IRS return also requires the owner of the virtual digital asset to declare the name of the virtual digital asset as well as its quantity and the date of acquisition. Probably these provisions are there, not there in the present finance bill, but these would come with the afflux of time. The third problem is that they have failed to appreciate another important facet of virtual digital asset. जो लोग क्रिप्टोकरेंसी के अंदर ट्रांजैक्ट करते हैं अपने मेंबर्स या उनके क्लाइंट्स, सो दे वुड बी अवेयर कि क्रिप्टोकरेंसी के अंदर सर एक तो परचेज और सेल से ही प्रॉफिट या लॉस नहीं आता, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो क्रिप्टोकरेंसी की माइनिंग भी करते हैं. सो यू नो इफ दे आर माइनिंग द क्रिप्टोकरेंसी, तो क्रिप्टोकरेंसी अगर जनरेट होता है, क्रिप्टो कोड जनरेट होता है, तो इट बिकम्स देयर इनकम बिकॉज दे बिकम ओनर ऑफ द cryptocurrency or the virtual digital asset. So the present provisions of the Finance Bill 2022
are presently silent about taxation of income arising in the hands of the assessee on account of mining of the virtual digital asset. तो सर ये एक तीसरी प्रॉब्लम वर्चुअल डिजिटल एसेट के अंदर है. A, global standards have not been complied with. B, the government is oblivious of the fact, that lot many, almost, I was reading some website material, almost 10 crore Indians, they are said to have an exposure in cryptocurrency. So if this is that big an exposure or that big in magnitude, it is only augmenting towards the digital era, and which is the intention of the government also. So the tax rate on the virtual digital assets must be reduced. A. Number B, it should not be looked into as a methodology to mitigate the tax liability or to evade the tax liability. अब सर एक सवाल आता है यहाँ कि 1/4/2022 के बाद अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट में ट्रांसफर कर देता हूं तो उसके ऊपर तो मुझे 30% टैक्स देना है प्रॉफिट. बट 31 मार्च 2022 तक अगर मैं वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफर करता हूं उसका क्या होगा? इज इट अ कैपिटल रिसीट और इज इट अ रेवेन्यू रिसीट? though it is in the nature of income, day before yesterday, fortunately, the CBDT chairperson has clarified that it will continue to remain. It means the profit from transfer of virtual digital asset shall continue to remain an income and shall be taxed according to the provisions of law. Now, this is very important. Very important. Taxed according to the provisions of law. So, Nehaji, just in case the assessee is able to prove that the investment in cryptocurrency was a long-term investment, he will be able to offer the corresponding income as capital gain, depending upon the period of holding. And in case it is found that he was a trader in virtual digital assets, he can claim it as a business income at normal rates of tax with respect to incomes earned on or before 31 March 2022. Am I clear, sir? Virtual digital asset. अब वर्चुअल डिजिटल एसेट पर सर किसी पार्टिसिपेंट की, किसी अटेंडी की कोई क्वेरी हो तो वो पूछ लीजिए, अदरवाइज इसके लास्ट पार्ट पर आता हूँ. somebody was trying to raise a hand. There is a raise of hand from one attendee. If we can unmute him, Kirti Rajan Patra Khosla. If we can unmute him. Kirti ji, I've given you the rights to talk. You are muted. Yes, Mr. Kirti. We can see you. You can unmute yourself, sir. I think he's unable to unmute himself. Let's go ahead, sir. Just in case he yes, sir. Now we can hear you. बताइए. नहीं ये wrongly मेरा हाथ टच हो गया. Sorry. ओके तो सर ये टच फैसिलिटी कई बार बहुत अच्छी भी है, कई बार बहुत खराब भी है. चलिए सर आगे चलते हैं. 194 एस पर आते हैं, which is the last provision pertaining to virtual digital asset which has been newly inserted by Finance Bill 2022. Now what does this section says? This section casts a responsibility on the transferee to withhold tax with respect to payment made by him to the transfer of virtual digital asset, to the transfer of virtual digital asset, and the rate of TDS is 1%. Now there are 2-3 issues in this. Number one, in most of the cases, there is no one-to-one transfer of virtual digital assets. The people who deal in crypto, who deal in virtual digital assets, they would be aware that the virtual digital assets, they get transferred from virtual currency platforms, through virtual currency platforms like WazirX, like Binance, So in that case, on whom the responsibility shall arise? Will it fall upon the virtual digital currency provider or the platform provider, or will it fall on the transferee? Number one. Number two, the law is silent as to what shall be the value at which the virtual digital currency TDS will be required to be deducted, and whether this value will be considered as a fair value and whether it will be admissible as an evidence in support or against the assessee. Let's say, let's take a small example that today Bitcoin is about $40,000 or $38,000, 1 BTC.
and let's say I find out a fool or a good friend of mine, he intends to transfer Bitcoin to me, and he transfers it to me on 2nd April 2022 for $30,000. Now, whether the TDS will be required to be deducted at the sale consideration, that is equivalent to INR equivalent to $30,000, or will it be INR equivalent to $38,000? Number one. Number two, the problem becomes grave and it increases because, in contradistinction to section 115, rule 115 capital A of the Income Tax Act, where the TT buying rate and TT selling rate, as well as in contradistinction to the to the fair market value of the shares and securities which get published by the stock exchanges, there is no historical data of virtual digital assets which is backed by any sovereign. Sovereign means any country or any of its governments. Again, what will be happen, on which value TDS will be deducted? Thirdly, the problem on 194S is arising because the obligation to deduct tax at source has been casted on a resident transferee. Now, what if? Because I am transacting, let's say, through Binance, just like I am selling the shares through my stockbroker, I don't know who is the buyer. Just like that, on the Binance, I don't know who is the seller. So then, in the absence of the identity of the seller, a buyer who is a resident buyer, is there any material before him so that he can come to a conclusion that the seller is an Indian seller or he is a non-resident Indian or located outside? This is another problem so far as the TDS provisions are concerned. Now coming to another facet of it, what they have proposed is that they are going to tax at 30% the income arising from transfer of the virtual digital asset. They will permit the cost of acquisition, obviously. But then there is nothing in the entire finance bill which would prove or which can prove or which can hint or which can give any sovereignty or any solace or any confirmation that the government has legalized the virtual digital assets. On the contrary, sir, the Finance Secretary of India, the Revenue Secretary and Finance Secretary, on the budget date itself, after the budget, they said that there is no intention of the government to legalize the cryptocurrencies or the virtual digital assets other than the central bank digital currency. So this is yet another problem. Let's say somebody purchased a virtual digital assets out of unaccounted income and the gain is there. He offers the gain appropriately by paying tax at 30%. Now the question arises, does the payment of taxes arising on account of income from transfer of VDA could itself absolve the SSE from questionability about the incurrence of cost of acquisition of such virtual digital asset? Number one. Number two, we all know virtual digital assets, we can't put these assets in our pockets. These are stores on a mobile. So let's take an example that an Indian SSE, he went to Dubai. There he purchased virtual digital assets and he comes back to India. When he is in India, Mr. Khanna would appreciate, when he is in India, he transfers this virtual digital assets. Now, what he has done, and he is agreeable to payment of taxes. But here again, notwithstanding that he has paid taxes, there is a violation of the Black Money Act also. Am I right, sir? There is a violation of Black Money Act also. Number one, there is a violation of the provisions of FILMA also. In many cases, yes, sir, you wish to add something. Siddharthi, may I interject? This matter was discussed at length in one of the meetings of the Accounting Standards Board when the finance minister on the floor of the parliament announced that this virtual currency, cryptocurrency, is not a legal tender and not legal money. And there is no legality to it, and therefore we do not recognize it. At the same time, when the matter came up before the institute,
we pointed out, I had pointed out that there were then 8 companies registered in India which were to deal in cryptocurrency. I said, why did you allow them to be registered if you say it is not legal? Issue is legality has to be decided by the courts, not by the on the floor of the parliament in somebody making a statement. Issue is the origin and source of the cryptocurrency or virtual currency or virtual asset is a very important issue for taxation. Just as you have unexplained money in the books, or you have unexplained money being utilized for acquisition of assets. So it comes out of either black money, unexplained money, or the original source is that you have money in the books which you have turned around or whatever. This is a complex issue. The Reserve Bank was told to prepare a white paper on digital currency and cryptocurrency, particularly when I pointed out that Japan has already taken the lead at that stage. They had already taken the lead and come out with they have regulated it. They have Canada followed Australia. Now take an instance, what I pointed out was that you cannot ignore digital currency in the modern world. Suppose I have a branch in Japan and I am located in India. Okay, the payment will be acceptable to them in cryptocurrency or virtual currency. Let me put it that way. Now, how can you say the transaction cannot take place because it's acceptable to them? Similarly, they have a head office there and I have a branch here and some other office in Malaysia. Now they say we will settle the account. Some mode of settlement. Don't forget. Actually, this is threadbarely having perused the provisions pertaining to the virtual digital assets, not only under the proposed income tax finance bill 2022, but having threadbarely gone through the best practices across virtually all the global economies in last 6 months. As said by you that you considered the accounting aspect of virtual digital assets in a meeting before the Accounting Standards Board. This is probably what you said, sir. So no. Let me come to a very fundamental issue. You're acquiring the digital currency if the source is explained, then that may multiply, it may increase in value, it may decrease in value. That increase or decrease in value of holding of the asset does not result in any gain or loss. It can result in a loss. Because losses in accountancy are recognized. Okay. Now, if it is explained currency, see what I may actually say here is 5 lakhs of rupees. I want to buy digital currency to pay off a debt to a person who says pay me in digital currency. So in my books, it gets converted. So my cost is 5 lakhs. Okay. Now when I bought goods worth say 6 lakhs of rupees, and that 5 lakhs is to be utilized equal to 6 lakhs, then there can be a gain. Yes. There can be a virtual gain. I can understand that. But to say when I buy 5 lakhs and give 5 lakhs to the person, there is no gain. No 30%, no nothing, no percentage applies. Because I am not gaining or losing any money out of it. So the issue is, first of all, determine the origin and source of the money. Then you see, if you're only holding it, then any appreciation is not chargeable to tax. It is only when you utilize the appreciation to square off a transaction that the difference between my cost and my utilization value will be my gain at best or worst. Isn't it? Now the problem is the transferee is responsible for the PCS. Now the transferee may be here or sitting abroad. So what do you do to people sitting in Australia or Japan settling an account for something supplied to India? I can tell Australian counterpart of mine, please, pay off. How do I do that account? It's not possible. I can only account for my purchases. And the settlement is made by somebody else. I don't know what his gain or loss is. Yes. So I am not supposed to be responsible for the sins of others. सारे जहाँ का दर्द अपने जिगर में है, not possible. My suggestion, Siddharth, would be, please revert immediately to the Accounting Standard Board of the Institute and find out what is the stand they have taken with regard to the accounting of it. Because the accounting of this is very, very crucial and critical.
that will determine whether there is a gain or loss to me. If I do not account correctly or don't account for it at all, there will be a problem. And so far, your RBI is not clear. Maybe तुसी लिख लो 12 तारीख के बाद ही ASB में examine करते हैं. And just to complement what you said, sir, you know, actually let me tell you, the participants also, as per France Accounting Standards Authority, the virtual tokens held by the corporates are to be classified in the category of cash instruments in their respective annual financial statements, and this is verifiable online also. So this is where, you know, the global economies is, and this is where, you know, we are still skeptical and suspectical that probably some kind of a money laundering is or happening or may happen through virtual digital assets. But, you know, the fact remains that, I don't have any fear. And even considering the fact that this is being recorded, you know, the fact remains that the virtual digital assets have given goosebumps, and, you know, strenuous goosebumps to all central banks of all the countries. You know, now with the click of a button, you know, the money, you know, the conventional wirehouses, you know, the money exchangers, they all will be put to rest. They all will be put to rest, because in case today I wish to transfer some money, let's say to Paris, even to make a payment against import of goods, I need to go to, you know, a chartered accountant, get a form 15 CB, then I need to go to the banker, then, you know, he will wire the money. I need to have the SWIFT bank details of the intended recipient, and then I need to cross-check is whether you have gotten the money or not. And these things do take a time. Now, what is happening through virtual digital asset is even there is a cross-border instant transfer of value, not money, value. And this is where, you know, the central bank of most of the developed economies, as well as of the developing and underdeveloping economies, are facing it troublesome. And, you know, the question is not about their control. You know, the prima facie question is about now their existence. That in case this is not regulated, you know, they will go off, the conventional banking will go off. 500 years of conventional banking will go off, and it will be taken over by the virtual digital assets. And just for the benefit of the participants, you know, in 2015, Financial Action Task Force, which is the global benchmark set up for Anti-Money Laundering Act laws and, you know, Counterfeit Terrorism Acts, you know, it estimated that virtual digital currencies are almost about now 1.5% in that time, at that time, of the total value of merchandise of the countries all over the world. And in 2020, when they tried to estimate it, you know, they found it that it was somewhere about 7 to 8% of the total value of the merchandise of goods and services globally. So now from 2019 or 20, we are in 2022. And, you know, you see the craze of this virtual digital assets amongst the youngsters, you know. I mean, I have been already saying, and what sir said, that, you know, probably we lagged behind in bringing out the legislation timely, and now bringing out a legislation with a discouraging or, you know, pretty high rate of tax, we are only, you know, further inviting trouble onto ourselves. Yes, sir, you wish to add something, sir? Siddharthji, I will only add, may I add one thing? Yes, sir. Siddharthji, may I add one thing? You see, the accounting, I say, is of critical importance for a reason. Because one wing of the transaction will always be recorded in the books to be able to determine the profit or loss on the digital currency utilized for that purpose. Now, if a transaction is totally outside the books by way of digital currency, you will never know. Because if I make purchases of goods, say worth 5 lakhs of rupees, then the purchase comes into my books. And the settlement is only through a virtual currency, which will get recorded. Now, if I have to buy 5 lakhs worth of goods and pay in currency without recording it, nobody on earth can know. Let me tell you this. Obviously, the only problem is it will be leading to unwarranted litigation for assumed transactions which are not real, which are non-existent, which may be in existence, but you don't know. So what I'm saying is
that there has to be a transaction recording of one wing of the transaction. You see, I may pay in digital currency and acquire an asset. Now that can be by way of a service, it can be technology, it can be digital, or it can be non-digital. If it is non-digital, it's easy. When I acquire it, there has to be an agreement. Suppose I have to buy technology and there's an agreement. That is also going to be recorded. Question is the recorded transactions which one wing is digital currency or digital asset. Okay, I can receive an asset also. Now that is a mode of settlement. Let me put this, the words I have used in the accounting standards board is that this is only involving a mode of settlement of a transaction for acquisition or sale. And therefore, what gets recorded in my books will only be the basis on which taxation can take place. But if I'm holding currencies, any appreciation thereon, and subject to my accounting policy for depreciation, whatever entries I make are going to be very, very critical and crucial. See, I've been connected with the accounting standards board for donkey's years. And therefore, I raised these issues at the time. This is about 5-6 years ago, and I told RBI, why don't you come out with a white paper? And RBI I don't think has come out with anything concrete. To my mind, to conclude what I'm saying, there is going to be tremendous amount of litigation on this. So one more flood stream of litigation can be expected, and you will see several changes of which I talked. When I talked that there will be several changes, is because the drafting will be hit, the courts will interpret in their own way. Let me tell you, by and large, many of the people do not even understand what is digital currency. Yes, sir. It's a very complex subject for them. May not be for you and me because we have a logical mind and we can easily digest it. But to explain to the authorities, it'll be very, very difficult. And so I'm saying, be prepared for litigation. Yes. And there will be a number of questions on this that need to be answered. More questions will be there than the answers. And I think the government needs to wake up. They should have done their homework better. They could have postponed it, but they have not done so. Because today, let me tell you, without the law coming into force, people are already holding tons of such currency. Obviously. From where did they acquire it? It will be the issue. Okay. Right. So, anyways, so I will not want to disturb you. I'm sorry I've interjected because an issue arose regarding the digital currency vis-a-vis the accounting entries, which are going to be of importance. That is why, you see, what I suggest is the institute has to take a stand on how to account for digital currency in the books. They cannot give you any guidance on what to do for transactions outside the books. Outside the books, nobody will know and nobody can know. But what is important under the income tax law is what gets recorded, what will be the profit, at what stage, what are the losses, and at what stage TCS has to be taken care of, and to what extent. Will it be on the profits or will it be on the amount of outflow? Yes. TCS nowadays, of course, if you sell property, whether you have a profit or loss on it, TDS and all that comes into being. So the bottom line here is, what is the accounting required? I think the institute should be very clear, and I think we should expose the members to what the institute says and what is the tax law in the light of that. Obviously, I'm sorry for interjecting, Siddharth, but I thought I should bring it up. Thank you very much, sir, for enlightening upon the accounting aspect of the virtual digital assets also. And we all know, last 2 years have been really turmoil on account of COVID-19, and even the working of the members, even the working of the institute has remained disrupted. And of late, despite all said and done, this year happened to be an election year. So, but we all expect that the institute should quickly come out with a white paper or some kind of at least a guidance on so far as the accounting part of the virtual digital assets is concerned, just in the line with the global standards. Some of the benchmarks of some of the countries are already available. Not wasting much of the time any further of the attendees,
let's move forward. In case any member, any attendee has got any query on the virtual digital asset, I can take it now. And in the absence of, or you can put it in the chat box, and with the, placid and presumptuous, absence of any query, I am moving to the next issue, which is in the current finance bill pertaining to enlargement of power of survey. What had happened, sir, that prior to faceless, the power to survey was available to an assessing officer, where he was the authorized officer, and he could be authorized in this regard by the additional CIT or the JCIT, who would be the authorizing officers. Now, when the faceless regime was introduced on 24th of September 2019, that day, the department, they came out with an instruction and they came out with a clarification that now anymore the power of survey will not be exercised by the junior level officers, and it will be sparingly or restrictively used, number one. और ये पावर सर इन्वेस्टिगेशन विंग को और टीडीएस विंग के ऑफिसर्स को दी गई only after prior approval of conducting survey is given to them by the chief commissioner or the director general. यानी डीजी इन्वेस्टिगेशन सीसी टीडीएस या प्रिंसिपल सीसी टीडीएस या प्रिंसिपल डीजी इन्वेस्टिगेशन अगर उनको ऑथराइज करता है तो वो सर्वे कंडक्ट कर सकते थे. Now, through Finance Bill 2022, this was written in the explanation, in the long line, in the explanation after subsection 6 of section 133 capital A of the Income Tax Act. Now, what has been proposed in the Finance Bill 2022 is that this long line containing the words investigation, DG investigation, CCIT, TDS be substituted with principal CCIT, CCIT, principal DGIT and DGIT. यानी सर अभी तक जो रेफरेंस था जिसमें इन्वेस्टिगेशन और टीडीएस विंग का रेफरेंस था, it is not anymore now in section 133A prescribed authorizing authorities. तो इसका by default meaning क्या हुआ? इसका सर by default meaning ये हुआ कि now even the jurisdictional assessing officer, in case he is so authorized by the principal CC or by the CCIT, he can authorize, the assessing officer, he can conduct a survey. So that means the power to conduct survey, the authorities have been enlarged now. And I think this is a pretty, glaring section, widening of scope of conducting the survey. And therefore, the powers which were initially restricted by faceless regime, power of survey was called as an intrusive action. I still remember 24 September 2019. And that day it was said that only investigation wing and TDS wing will conduct survey, and no other authority under the Income Tax Act would be able to conduct survey. Now virtually the expression investigation wing or TDS wing, ये दोनों के दोनों सर हट गए हैं. तो इसका मतलब ये है कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज, कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी अब सर्वे कर सकती है प्रोवाइडेड उसके पास अप्रूवल हो चीफ कमिश्नर या डायरेक्टर जनरल का या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल का. So this is really enhancement, enlargement, widening of the power to conduct survey, which has been proposed to be, enlarged by Finance Bill 2022. चलिए सर, अब अश्विनी जी ने मेरी अगली ड्यूटी लगाई है कि फेसलेस के अंदर बताऊं, मैं मेंबर्स के साथ डिस्कस करूं कि फेसलेस के अंदर क्या चेंजेस आए. तो सर फेसलेस में क्या हुआ कि 24 September 2019 Taxation and Other Laws Amendment Ordinance was inserted. टोला it became law in 2020, जिसमें कि फेसलेस स्कीम को इंसर्ट किया गया सेक्शन 144 कैपिटल बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. उसके बाद उसको लेजिस्लेटिवली इंसर्ट किया गया प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में, फाइनेंस एक्ट 2021 के थ्रू. और अब उस पूरी की पूरी चीज को जो कि सेटल हो रही थी सर, उसको दोबारा से अनसेटल कर दिया गया by virtue of substitution of the section 144 capital B of the Income Tax Act. कुछ चेंजेस है सर.
जो नोटेबल चेंजेस है मैं वो बताता हूँ। नंबर 1, हम लोगों ने इनको कहा कि आपने फेसलेस के अंदर जो वर्चुअल हियरिंग की पावर है वो वर्चुअल हियरिंग की पावर नहीं है, तो वर्चुअल हियरिंग की पावर डाली, लेकिन ये प्रोवाइड किया गया कि वर्चुअल हियरिंग की पावर रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के चीफ कमिश्नर की अप्रूवल के बाद मिलेगी। तो सर एक तो रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर RFAC has been disbanded, number 1. Number 2, there is no such power now for seeking virtual hearing after approval from CCI. Assessing officer ही दे देगा. This is the second amendment. The third amendment is section 144 capital B subsection 9. It has been omitted. Before its omission, subsection 9 क्या कहता था सर? सबसेक्शन 9 ये कहता था कि जहां पर NFAC ने, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ने, नफाक ने कोई असेसमेंट ऑर्डर पास किया हो which is contrary or which is in contradistinction to the procedure referred in section 144 capital B of the Act, तो ऑर्डर क्या होगा सर? निरस्त माना जाएगा, बैड इन लॉ माना जाएगा। अब वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2021 से इसको हटा दिया। अब इसका मूलभूत कारण क्या था सर? What was the reason? The reason was that in many of the cases we know कुछ असेसमेंट 30 जून 2021 को टाइम बार हो रही थी सर। So we know the country was grappled with the second wave. तो फेसलेस स्कीम के अंदर ये प्रोवाइड किया गया नया जी कि अगर आप मेरी रिटर्न टोटल इनकम को वेरी करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो इट कैन नॉट बी चेंज अनलेस एंड अंटिल यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और मेरे पास आप डाउ भेजोगे। डाउ का मतलब ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर भेजोगे ताकि मैं डाउ का जवाब दे पाऊं। तो सर कुछ केसेस में क्या हुआ कि डाउ भेजा गया 20 अप्रैल 2022 को 21 को, डाउ का जवाब देने की आखिरी तारीख थी 24 अप्रैल 2021 और असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया गया 23 अप्रैल 2021 को। या डाउ का जो मैंने जवाब भेजा वो मैंने भेजा लेकिन वो फेसलेस वाले असेसिंग ऑफिसर कंसिडर नहीं कर पाए और ऑर्डर पास कर दिया। या मेरी प्रैक्टिकलिटीज कि मैं खुद, मेरा असेसी, मेरा काउंसिल और उनकी फैमिलीज और मेरा अकाउंटेंट सब कोविड के अंदर बीमार है रीजनेबल सर्कमस्टांसेस से, और मुझे अर्जेंटमेंट दे दी जाए तो वो अर्जेंटमेंट को टर्न डाउन करके अर्जेंटमेंट रिक्वेस्ट को असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे मामले सर विभिन्न जो है ना माननीय उच्च न्यायालयों के सामने जो है ना वो लोगों ने प्रस्तुत किए, संज्ञान लिया, वेरियस हाई कोर्ट्स ने उनका कॉग्निजेंस लिया, एंड स्पेशली दिल्ली एंड द बॉम्बे हाई कोर्ट, they are falling upon very heavily on the revenue and they are telling that this assessment is bad in law and they are setting it aside, set aside कर रहे हैं सर। आज ही मुझे पता लगा कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर फेसलेस के अंदर 144 कैपिटल बी सबसेक्शन 9 के अगेंस्ट एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑलरेडी चल रहा है कि अगर 144 बी 9 का वायलेशन हुआ है तो क्या असेसमेंट सेट असाइड होगी या असेसमेंट नॉन एस्ट होगी, यानी बैड इन लॉ। अगर नॉन एस्ट हो गई तो इसका मतलब यह है कि आप असेसमेंट दोबारा कर ही नहीं सकते क्योंकि टाइम बार हो चुकी है। सो दिस इज so far so the faceless is concerned. Now let's see what's next in the pipeline. Survey we have already discussed. Restoration, numerous challenges, changes in 148. Okay sir, 148 पिछले साल में सर सारा का सारा चेंज किया था। Nayadi, somebody from Voice of, okay, no, there was no query. सर पिछले साल तो पूरा 148 का प्रोसीजर चेंज किया था, सेक्शन सब्स्टिट्यूट किया गया था 148, नया सेक्शन इंसर्ट किया गया था 148 कैपिटल ए, सेक्शन 149 टाइम लिमिट्स फॉर इश्यूएंस ऑफ नोटिस अंडर 148 वो सब्स्टिट्यूट किया गया था, सेक्शन 151 को सब्स्टिट्यूट किया गया था। अब एक साल भी नहीं बीता कि दोबारा से I think there is some whether 2014-15 is suspended by law and assessment year 15-16 is time barred on 31/3/22। मिस्टर अर्पण बंसल है इसका सर एक बार ये कंप्लीट कर दूं 148 पूरी क्वेरीज का जवाब दूंगा, कौन सा टाइम बार्ड है, कौन सा टाइम बार्ड नहीं है, कौन से प्रोविजन के तहत और खुल सकते हैं, डोंट वरी।
It would be jumping to the conclusion, but I had to come to it anywhere. चलिए सर, अब क्या क्या अमेंडमेंट हुई देखिए सर। पहले समझिए कि सेक्शन 148 कैपिटल ए के अंदर क्या हुआ पिछले साल। 148 कैपिटल एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया और उसमें गौरव जी ये कहा गया, गौरव भाई, नोटिस फॉर असेसमेंट, notice for and allowing conducting of inquiry, proper opportunity to the assessee before issuance of notice under section 148. I acknowledge the presence of Vinay Jamwal ji from Jammu. You are welcome here, sir. Thank you, sir. Thank you so much. तो सर सेक्शन 148 कैपिटल ए इंसर्ट किया गया. It provided a procedure that where the assessing officer is in possession of the information, then the assessing officer shall, after the approval of the assessing authority, issue a notice to the assessee calling from him such information as he may deem fit. Subsection 2 to 140, clause B to 148 capital A would provide that upon receipt of such a notice from the assessing officer, the assessee would comply with this notice, filing such documentary evidence as he may deem fit. Subclause C, that the assessing officer will consider the evidence filed or the explanation filed by the assessee. Subclause D, 148 capital A, where the assessing officer, after considering the reply, if any, furnished by the assessee with respect to the inquiries, is of the opinion that an income has escaped assessment, he shall, with the prior approval of the appropriate sanctioning authority, he pass an order under section 148 capital A clause D, either recording a satisfaction about escapement of income, और दूसरा that no escapement of income is there. तो सर 148 कैपिटल ए सब क्लॉज डी के तहत अगर असेसिंग ऑफिसर को ये लगता था कि एस्केपमेंट ऑफ इनकम है, तो वो अप्रूवल किसका, सेक्शन 151 में जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसका लेकर 148 का नोटिस इशू करता था. 148 2021 में जो अमेंडमेंट हुआ वो ये कहता था कि 148 कैपिटल ए सबसेक्शन डी का जो ऑर्डर है 148 के नोटिस के साथ आप असेसी को इशू करेंगे, सर्व अपॉन करेंगे. नंबर 1. नंबर 2, वो ये भी कहता था 148 कि अगर आप 148 कैपिटल ए डी का एक ऑर्डर एस्केपमेंट ऑफ इनकम का पास कर रहे हो तो बिफोर इशुएंस ऑफ 148 नोटिस आप सैंक्शनिंग अथॉरिटी से अप्रूवल लोगे. तो सर थोड़ा सा इलॉजिकल था विनय जी. एक ऑर्डर जब मैं 148 कैपिटल ए डी में पास कर रहा हूं रिकॉर्डिंग अ सेटिस्फैक्शन दैट देयर इज एस्केपमेंट ऑफ इनकम, तो एक अप्रूवल मैं उस स्टेज पर ले रहा हूं और उसके परसुएंस के अंदर 2 दिन बाद जो मुझे नोटिस भेजना है उस नोटिस का दोबारा से उसी अथॉरिटी से अप्रूवल ले रहा हूं. सो व्हाट दे हैव डन, दे हैव ओमिटेड द रेफरेंस ऑफ प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द सैंक्शनिंग अथॉरिटीज in case an order is passed under 148 capital A clause D proposing and recording a finding that there is escapement of income. Am I right, sir? Am I correct? समझ आ गया सर? चलिए गौरव भाई फोन रख दो, फिर बाद में फोन करके मत पूछना. वैसे तो तुमने कह दिया कि फोन पे सारी क्वेरियों का जवाब दे देते हैं, ये सुन लो. अब अगला क्या हुआ सर? एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 148 लास्ट ईयर कितने केसेस गौरव जी डीम्ड एस्केपमेंट ऑफ इनकम के माने गए कि एस्केपमेंट ऑफ इनकम के कौन से सोर्सेज माने गए? केवल 2 सोर्स, ओनली 2 सोर्स. Any information flagged by the risk management strategy as may be formulated, and secondly, कौन सा objection sir? Final objection of audit received from the Comptroller and Auditor General of India that any assessment of income has not been made in accordance with the provisions of Income Tax Act. This Act. अब क्या किया सर? अब उस कैटेगरी को शायद थोड़ा सा बड़ा कर दिया. अब इन्होंने इसके अंदर कुछ और सर्कमस्टांसेस ऐड किए नहीं है. 148 एक्सप्लेनेशन 1 जो वर्ड फ्लैग्ड था एक्सप्लेनेशन 1 क्लॉज ए में, फ्लैग्ड को तो हटा दिया. Any information received as per risk management strategy of the income tax department, now that will be subjected, that can be subjected to a issuance of notice under 148. Second, any objection. पहले क्या वर्ड था सर?
फाइनल ऑडिट ऑब्जेक्शन, एनी ऑब्जेक्शन विनय भाई, फ्रॉम कहां से, पहले कहा था फ्रॉम एजीसीआर, सीएजी जिसको हम कहते हैं, ये लोग एजीसीआर बोलते हैं, हम सीएजी बोलते हैं, ठीक बोलना ही पड़ेगा क्योंकि ऑडिट भी तो वही देते हैं सर, ऑडिट भी तो वही देते हैं सीएजी वाले, ये लोग गलत बोलते हैं एजीसीआर। सो पहले था फाइनल ऑडिट ऑब्जेक्शन, अब क्या आ गया सर, एनी ऑब्जेक्शन फ्रॉम एनी अथॉरिटी, any objection from any authority that assessment has not been completed in accordance with the provisions of the act. दूसरा तीसरा, any information received under an agreement for exchange of information under section 90 or 98, 90 capital A, यानी विदेश से पता लग गया कि गौरव जी का एक कनाडा में बैंक अकाउंट है, गौरव जी आपका कनाडा में बैंक अकाउंट है, तो क्या करेंगे सर, साइड थोड़ा होना है सर, किसी क्लाइंट का होना है, आप ना नू दे होना है जी, चलिए छड़िए, वो बेनामी भी आ जाना है, फिर डीएमए भी आ जाना है, ब्लैक मनी एक्ट भी आ जाना है, चलिए सर। तो in case they receive any information from the authority under an exchange of agreement for exchange of information under section 90 or 90 capital A, that would also be amenable to section 148. Next, any information made available to the assessing officer in pursuance of a scheme notified by the CBDT under section 135 capital A of the Income Tax Act, वो भी 148 हो सकता है। और लास्ट, any information which requires action in pursuance to the order of a tribunal or a court, मारे गए। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने कहा गौरव जी के क्लाइंट ने डॉवरी के मैटर में 50 लाख रुपए शादी पे लगाए थे, लड़के वालों ने कहा 50 लाख का सोर्स प्रूव करो, कागज पत्तर दे पाए 15 लाख के, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कहा कि 50 लाख की इन्होंने क्लेम फाइल की थी, 15 लाख के कागज दे पाए, 33 लाख रुपए अनडिस्क्लोज सोर्सेज से इन्वेस्ट किए थे। Let a copy of this order passed by the undersigned be passed on to the income tax authorities for taking appropriate action under the law. मर गए सर। Any authority, any court or any tribunal, वहां से कोई भी इंफॉर्मेशन आ गई, मारे गए सर। तो ये कुछ सर्कमस्टांसेस सर सेक्शन 148 के अंदर इन्होंने इंक्लूड किए। अब एक्सप्लेनेशन 2 पर आते हैं सर। एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर इन्होंने जो सर्वे का रेफरेंस था 133 कैपिटल ए 5A का, वो हटा दिया जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 1/4/2022 से हटा दिया। उसके बाद आते हैं सर लॉन्ग लाइन पे एक्सप्लेनेशन 2 में क्या होता था सर, लास्ट ईयर जब 148 इंसर्ट किया गया विनय जी, तो किसी के यहाँ सर्च सीजर या सर्वे हो जाता था, तो जिस ईयर के अंदर सर्च सीजर या सर्वे होता था वो सर, और उसके प्रोसीडिंग 3 years, the year relevant previous year and the 3 assessment years preceding the previous year in which search has been conducted or acquisition has been made or survey has been conducted. For those 3 years there was a deeming fiction that income has escaped assessment. डीमिंग फिक्शन थी, बहुत लोग बहुत खुश हुए थे, बच गए। क्यों? क्योंकि पुरानी असेसमेंट जो 153A में होती थी विद रिस्पेक्ट टू सर्चेस कंडक्टेड ऑन और अप टू 31 मार्च 2021, उनमें क्या होता था गौरव भाई, 7 साल के नोटिस आते थे सर 153A के। मैं भी गलत तो नहीं कह रहा, 153A 7 years। नया भी मुस्कुरा रही है, बोले सुबह शाम यही तो देखते हैं दफ्तर में डैडी को झेलते हुए क्लैरिफाई कर देता हूं। तो अब क्या हुआ सर, लोगों को खुशी थी कि पहले 7 साल के यानी ईयर ऑफ सर्च और पिछले 6 साल की कंपलसरी खोलते थे 153A में, अब थोड़ी सी इनको शांति मिल गई, अब सिर्फ 3 साल के खुलेंगे, पुराने 3 साल के तब खुलेंगे जब 50 लाख से ज्यादा की एस्केपमेंट हो इन पर्टिकुलर ईयर। अब क्या किया सर, रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करके गौरव जी, रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट 1/4/2021 से करके इस लॉन्ग लाइन को 3 असेसमेंट ईयर प्रीसीडिंग दी
assessment year relevant to the previous year in which search has been conducted or requisition made, इसको डिलीट कर दिया। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि सर सीजर सर्वे के केस के अंदर कितने भी साल खोल सकते हैं, not only 3, now they can go up to even 10 years, provided they could have done it under the old law prior to its amendment or substitution by Finance Act 2021। ये भी डाल दिया सर सेक्शन 149 के अंदर, ये भी अमेंडमेंट कर दी कि अगर 148 में, 153A में, 153C में जिस दिन ये नोटिस इशू कर रहे हैं, अगर वो नोटिस पुराने सेक्शन अगर रहा होता, उसके मुतालिक उस डेट ऑफ इशुएंस पर अगर कर सकते थे, तो आज नए कानून में भी कर पाएंगे। दिस हैज ऑल्सो बीन क्लैरिफाइड। चलिए सर, अब आते हैं 149 पर। 148A के अंदर कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। 149 पर आते हैं सर, 2 बदलाव हैं। पहले क्या हुआ सर, जिन लोगों के केस में डीम डिविडेंड आता था या जिनका 80IC, जम्मू में सर सीधे ना 80IC के केसेस, 80IC के डिसअलाउंस हो जाते थे, 10cc भी नहीं दाखिल किया या सिस्टर कंसर्न को जो है ना कम परचेज कॉस्ट के ऊपर सेल कर दिया ताकि वो प्रॉफिट वहां पर हायर दिखा लें। तो उन सब केसेस में क्या होता था सर कि असेसी और काउंसिल दोनों बहुत खुश हो गए थे लास्ट ईयर। खुश क्यों हो गए थे? बिकॉज 148 तब हो सकता था मोर देन 3 years, नॉट एक्सीडिंग 10 years, where the income escaped is recorded in the form of asset। अगर मेरे एसएससी का एक बोगस एक्सपेंडिचर था, उसका डिसअलाउंस होना था और उसमें 4 साल हो चुके थे, तो 148 1/4/2021 में जो कानून आया था उसके मुतालिक नहीं हो सकता था, बिकॉज the escaped income in case of more than 3 not exceeding 10 years must be recorded in form of an asset and it should exceed कितना गौरव जी? 50 लाख। 50 लाख बहुत धोया सर, बहुत मारा। अब क्या किया? 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर 2 सर्कमस्टांस और डाल दिए। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड एट अ सेरेमनी और ओकेजन। सेकंड, एनी एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स? पक्के वाली, कच्चे वाली, अकाउंटेड, अनअकाउंटेड। मैं कुछ नहीं बोल रहा सर, लीक मत करना यार ज्यादा, ये जिंदल साहब को बोल रहा है यूट्यूब पे ना डालें, कहीं कोई देख लेगा, कहां वाला वहां वाला जाग जाएगा। चलिए सर, अब वो सारा भी हो सकता है। एक्सपेंडिचर अगर इनकर की है आउटसाइड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है मोर देन 50 लाख, that can also be subjected to 148 if there is any entry in the books of accounts। अब सर जब एसेट की बात आई तो मैंने किसी से पूछा डिपार्टमेंट में, मैं कहा तुम शेयर कैपिटल पे पुराना कैसे खोलोगे? बोले खोल देंगे, एसेट है। मैंने कहा बैलेंस शीट में कितने दिखाते हैं आपका? बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं सर शेयर कैपिटल को? लाइबिलिटीज के अंदर, एसेट में नहीं, लाइबिलिटीज के अंदर। बोले यार गलती ठीक कर रहे हो तुसी, इट इज नॉट एन एसेट in the hands of the company, it is a liability। Now they can reopen it because even if it is a liability, it is an entry recorded in the books of accounts। चलिए सर आगे चलते हैं। एक और अमेंडमेंट है। क्या हुआ सर कि मुझे नहीं लगता कि रिकॉर्डिंग यूट्यूब के ऊपर जाएगा। रिकॉर्डिंग नया जी 5 मिनट बंद कर दो, दोबारा रिज्यूम कर लेंगे। वो स्किप कर दो, आप फोन पे बात कर लेना। अच्छा चलो सर। हाँ सर, रिक्वेस्ट है अगर आप क्वेश्चंस अब ले पाओ, बिकॉज वी आर ऑलरेडी एट 5:25। हाँ, I think take some questions before we proceed। Don't worry, this is probably the last, second last big thing। Another 10 minutes and I'll summarize it because we could not run it through। Now the last thing is, what has happened is where an escapement of income of more than 50 lakh has occurred for any assessment year preceding the 3 preceding assessment years up to 10 years, 148 could have been issued only if the escaped income exceeded 50 lakh rupees। अब सर क्या किया? 149 के अंदर एक नया क्लॉज डाला, सबसेक्शन डाला 1 कैपिटल A।
जिंदल साहब सुन लो, तुसी पार्क बाद में घूम लेना। 149(1)(a) के अंदर एक नवा सेक्शन डाला। मेरे को जिंदल साहब से पैसे मिले 24 लाख रुपए एक साल में, और दूसरे साल में मिले 36 लाख रुपए। कितने हो गए? 60 लाख। और जिंदल साहब के पास कहां से आए? जिंदल साहब को खुद नहीं पता कहां से आए, खुद नहीं पता कहां से आए। तो अगर उनको ये पता लग गया कि जिंदल साहब को नहीं पता कि ये 60 कहां से आए, तो मेरे हाथ में क्या करेंगे सर? मेरे हाथ में अब कर देंगे। 1/4/21 से पहले के बाद नहीं कर सकते थे, बिकॉज आई वुड हैव सेड कि 50 लाख से कम है। नाउ व्हाट हैज बीन प्रोवाइडेड इन 149(1)(a that where an income or entry or an asset or an expenditure has been incurred over more than one assessment year, notwithstanding the fact that the aforesaid escapement is spread over 2 years, to the extent it is in excess of the limit of 50 lakh, the assessing officer shall be competent to issue notice under 148 for both the years, दोनों सालों का। चलिए सर, अब ये 148 के ऊपर था, 149 पे था, 149 कैपिटल 148 कैपिटल ई पर था। अब एक चैट बॉक्स में 148 से रिलेटेड एक क्वेरी है, सर वेदर असेसमेंट वेदर 2014-15 असेसमेंट ईयर इज टाइम बार्ड एंड 15-16 इज टाइम बार्ड और 31/3/2022। तो चलिए सर, सबसे पहले असेसमेंट ईयर 14-15 की बात करते हैं। असेसमेंट ईयर 14-15 के नोटिस कब तक आ सकते थे सर? पुराने कानून के अंदर, पुराने लॉ के अंदर 149 would say more than 4 years, not exceeding 6 years from the end of the relevant assessment year to which the case pertains to. तो असेसमेंट ईयर 14-15 कब टाइम बार हो गया सर? 31 मार्च 2021 को टाइम बार हो गया। नए प्रोवाइजो में क्या कहा गया? सेक्शन 149 सब्स्टिट्यूटेड में क्या कहा गया? That where under the new law you could have issued a notice for any assessment year, in case the old law was in existence today. अगर आप पुराने कानून के अंदर आज किसी साल का नोटिस दे सकते थे, तो नए कानून में भी दे पाओगे। पुराने के हिसाब से अगर नहीं दे सकते थे, तो नए में भी नहीं दे पाओगे। So sir, as on today, assessment year 2014-15 has already gotten barred by limitation. As on 31st March 2021, there is concurring judgments of Honorable Rajasthan High Court, Honorable Delhi High Court, Honorable Allahabad High Court on this issue, where such notices for AY 13-14 and 14-15 issued by the department after 31st March 2021, they have been held to be bad in law and they have been quashed as such. So far as assessment year 15-16, in case Arpan Bansal is listening, is concerned, it will get time barred on 31st March 2022. And therefore, even under the old law, and therefore for assessment year 15-16, notice under section 148 can be issued up to 31st March 2022, provided the assessing officer follows the procedure as per section 148 capital A of the Act. If search is conducted after 31/3/22, whether they can open up to assessment year 15-16. Sir, this is a very disputed and a very important question, because उसके अंदर ये देखना पड़ेगा कि पुराने कानून के अंदर 153A के अंदर रीओपनिंग कर सकते थे क्या? मैं इसको आपको स्पेसिफिकली जवाब देता हूँ। लेट अस से आपके जिस केस की आप बात कर रहे हो, उसमें 1 अप्रैल 2022 को सर्च हो गई थी। अब सवाल ये उठता है कि 1/4/2022 को अगर सर्च होती तो कितने साल पुराने खुलते सर? पिछले 10 साल पुराने खोल सकते थे, 7th, 8th, 9th, 10th year तक, where the individual or aggregate income has escaped assessment aggregating to more than 50 lakh and it is recorded in the form of asset. तो अगर उनको ये असेसमेंट ईयर 15-16 का 1/4/2022 के बाद की सर्च में मिल गया, तो सर बिल्कुल खोल पाएंगे, बिकॉज 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर एक अमेंडमेंट कर दी गई है, जहां लास्ट ईयर तक वर्ड 148 था, वहां 153 कैपिटल ए और 153 कैपिटल सी भी डाल दिया गया है। सो उसको आप परयूज कर लीजिएगा। Proviso to section 149 subsection 1 has been substituted
And now the words 153 capital A and 153 capital C have been inserted. Am I right, sir? Now 148, no other queries. Query by Janmaya Mohapatra, please clarify on which head income from VDA would be assessed, sir. Why not assessment of VDA under PGBP? Sir, you see, in case we come to VDA, you know, they have used two expressions which prima facie indicate that perhaps the intention was to tax the VDA gain under the head capital gain, because they have used the expression cost of acquisition and also they have used the expression income from transfer. You know, by the word transfer, we mean transfer of a capital asset. But incidentally, there is no such specific head under which it is proposed to be taxed or it is proposed to be considered. It is a special provision for taxation and probably it will be taxed as a special provision per se itself. So far as income from other sources is concerned, you know, they have in 56.210 only receipt of, you know, virtual digital assets from non-relative for a consideration which is either by way of gift or for a consideration which is less than the fair market value will come by virtue of a deemed income. But so far as transfer of income from transfer of VDA is concerned, it is a special provision for taxation and probably no specific head of income has been stated. Somebody has asked why not assessment of VDA under PGBP. You know, I leave it to the prudence of the legislature, because if you ask me, you know, if we say it's a business asset, then at the same time, you know, there will be contentions, there will be, you know, queries, there will be, you know, submissions that it is also in the nature of a capital asset and you tax it as short-term or long-term capital asset. So I leave it to the prudence of the legislature, what they have done and what they have thought before doing it. But as of now, the fact remains that the income arising from transfer of virtual digital asset will not be subjected to tax under any 5 heads of income. It is being sought to be taxed under a special or a specific regime of taxation. So I hope this is clear. Nehaji, I hope that there is no other query. In case there is any other query. Sir, have you answered all the 3 questions in Q&A box? I think Arpan Bansal's one query is answered and I have clicked it, done. The another query from Mr. Arpan Bansal is under budget 2022, whether amount of rupees 50 lakh per year is changed from cumulative block to 7 years. You know, yes, it has been changed, but it is to be seen in which perspective you are raising this query. If you are raising this query in continuation of your earlier query of such case, this limit of 50 lakh individual or aggregate will apply, because under 153 capital A, the limit of 50 lakh was aggregate or individual for 7th, 8th, 9th, 10th year. If you are raising this query in the perspective of section 148, then you know it is required to be seen that the nature of escaped income aggregating to more than 50 lakh should be same. If it is different, you know, it will be a question open to judicial examination and scrutiny. So I think this query is answered and I'm done. Now Mr. Anil Jain is asking, I did not file return for assessment year 17-18. Up to which date any notice could be served for filing return if income is 34 lakh? Assessment year 17-18. The assessee has not filed the income tax return. We are today on almost about 31st March 2022. So it's a case of non-filing of income tax return where the allegedly escaped income is more than 50 lakh and more than 3 years have completed from the end of the relevant assessment year to which the alleged escapement pertains to. 2017-18 assessment year है relevant, उसके 3 साल सर complete हुए 31 मार्च 2021 में. So it's a case falling under section 149 subsection 1 clause B is 3 but not more than 10 years from the end of the relevant assessment year. Now in this situation, A, the approval of Chief Commissioner under section 151 is required to be taken. Number 2, the escapement of income, presuming
that there is no other escaped income. Since it is less than rupees 50 lakh, perhaps it has become time barred for the department to take a recourse to the provisions of section 148 of the Act in the factual circumstances, provided there is no other escaped income beyond 34 lakh. I hope this is clear. Chaliye, sir. Sir, one last question is there in the chat box by Amit ji. In case Form 10B has been filed on accrual basis in the financial year 1920, but he wants to file Form 10B on cash basis in financial year 2021, can they do so as per Finance Bill 2022? Form 10B is to be filed on cash basis only. My question is, from which year? Okay, okay. You see, it is this amendment is prospective. Number two, the query is that whether I can shift from the accrual system of accounting vis-a-vis application of income for the purpose of section 11 and 12 to cash system of application of income. You know, there is per se prima facie no bar within the provisions of the Act, as long as, you know, change in method of accounting. You know, the Income Tax Act is silent, but we need to come back to the conventions of accountancy, accounting policies. Now, if we read Accounting Standard 1 with Accounting Standard 4, there might be a situation that the trust may say that the accounting standards are not applicable to me. Having said so, but in the absence of anything contrary, you know, the General Provisions Act would be applicable. So when can accounting policies be changed? Accounting policies can be changed on either on account of legislative amendment, or where the change in accounting policy would result in better presentation and preparation of the financial statements. In this case, on account of a prospective change, you know, prospective change as suggested by Finance Bill 2022, it appears that yes, you can switch over to cash system so far as considering the application of income is concerned, but it is advisable to seek a detailed management representation letter, as well as to disclose the change in policy and the circumstances based on which the policy is being changed in the audited financial statements, or, you know, by virtue of notes to accounts or by virtue of other observations, because we know form number 10B के साथ digitally सर सिर्फ form 10B जा सकता है, उसके साथ annual accounts attach नहीं हो सकते. Am I right, sir? I hope so. I am right. So form 10B के अंदर other observations का एक column है, तो ये अपनी other observations सर वहां जरूर डाल देना. I think this will be helpful, and subject to that you can there is no problem, no issues that you can switch over to this change in the method for application of income. तो सर समय सारणी जो है लगभग 5:40 हो चुकी है. जिंदल साहब वॉक कर रहे हैं और पिक्चर अभी बाकी है, तो मैं जिंदल साहब को यही कहूंगा कि जिंदल सर इसको there are other things also, और पिटारे में सर बहुत कुछ है, but you know, the members are there and they have been patiently listening since quite a considerable time. So I'll go by what you say, sir. Yes, sir. If you say we can continue, if you say we can culminate it and we can again come back. We will again plan, Siddharth bhai, in detailed session. Rather, हमारे साथ ना विनय जम्बाल जी भी जुड़े हुए हैं, जो जम्मू जे के ब्रांच के चेयरमैन है. तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है विनय जम्बाल जी. तो इनका भी एक प्रोग्राम करना है, तो आप अभी मैं आपको नंबर शेयर करूंगा विनय जी का, आप इनसे जरा कोऑर्डिनेट कर लेना सर, बत्रा जी का और आपका जम्मू ब्रांच में. हाँ, तो थैंक्स. आज का सेशन बड़ा अच्छा हुआ. अगर आपका कोई टॉपिक आपको लगता है कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट है जो आप डेलिब्रेट करना चाहते हैं 10-15 मिनट में, देन इट इज एज पर योर विश, अदरवाइज वी मे कंक्लूड सर. सर देयर आर 2-3 थिंग्स सो फार एज, क्योंकि आपने अश्विनी भाई चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन के बारे में बाकी तो सब लोग मेमोरेंडम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेमोरेंडम इस बार जो है वो सीआईटी अपील सबमिशन या आईटीएटी सबमिशन जैसा लग रहा है. फाइनेंस बिल के अंदर लगभग 60 पेज है, और मेमोरेंडम जो डायरेक्ट टैक्स के प्रोविजंस को एक्सप्लेन कर रहा है, इट इज रनिंग इनटू एज गुड एज 112 पेजेस. बट नॉटविथस्टैंडिंग दैट, I am stressing on to 2-3 important things which probably have wrongly been interpreted or have wrongly crept in.
MM Khanna sir, I had promised to you that there are some, wrong draftings which I will highlight. Incidentally, I could not run through the entire provisions clause by clause, but now I wish to highlight some of these infirmities. Number one, in case of charitable trust and institutions, we know the payments to specified parties are prohibited in case these are unreasonable. The parties have been referred under section 13, subsection 3 of the Act, and the unreasonable payments have been referred under 13(1)(c) of the Act. So let's take a small example, Gauravji, that there is a charitable trust and I am its trustee, and as per my education qualification, I can command a salary of, let's say, 24 lakh. And on the contrary, the charitable institution has paid me a salary of 60 lakh. So the 36 lakh, which was unreasonable, it was being continued as non-application of income in the hands of the trust, even under the old law, even under the new law. Under the new law, it is being treated as specified income under section 115 BBI and will be subjected to 30% rate of tax. There, the problem is not there. The problem is about the new penalty which they intend to impose under section 271(a)(e). Now, what does this section says? This section says, heading is unreasonable payment made to specified parties. Please appreciate the heading, unreasonable payments made to specified parties. And what does the section say? Section 271(a)(e) says, yes, I can read what you are saying. I can lip read you, Gaurav Bhai, that aggregate of the amount paid, applied, aggregate of the amount applied directly or indirectly for the benefit of the parties specified under 13(3), 13(1)(c) of the Act. Aggregate amount. तो सर ट्रस्ट के हाथ में डिसअलाउंस क्या करेंगे? 36 लाख. और खन्ना साहब पेमेंट कितने रुपए के ऊपर पेनल्टी लगाएंगे? 60 लाख. And this is the drafting lacuna, which probably by now they might have also observed, and they might also wish to come back. Now the second drafting, or the error has crept in. They say now the commissioner, even the commissioner was empowered, CIT exemption was empowered earlier also to withdraw the recognition or registration of the charitable trust or institution, as the case may be. Now a timeline has been provided for him to pass an order which will be 6 months from the end of the quarter in which he issued the first notice. But that is not the issue. The issue is that where the commissioner, in case he finds the specified violation, they have defined specified violations, or where a reference has been made to him by the assessing officer, or the case has been selected in accordance with the risk management strategy of the income tax department. अश्विनी जी, अब यहाँ ध्यान से सुनना क्या गड़बड़ की है. इन तीनों सर्कमस्टांसेस में जहां कमिश्नर को स्पेसिफाइड वायलेशन मिल गई, या एओ ने कोई रेफरेंस दे दी, या रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के तहत केस को सेलेक्ट कर लिया गया, तो सीआईटी एग्जेम्पशन में कंडक्ट सच इंक्वायरीज एज ही मे डिजायर. Based on such inquiries, he may either drop the inquiry and find that the activities are being carried on in accordance with the provisions of the trust deeds, etc., or he may withdraw the recognition. Ashwini ji, he may withdraw the recognition. Kere saal da? Kaun se saal ka? Not only of the previous year in which such violations have been noticed, but for all subsequent assessment years. Now the query is, you find out a violation in 1 year, you discovered it. I welcome Chairman Regional Council, my younger brother Avinash Gupta ji. Sir, तुसी mask हटा सकते हो अपना, so that and attendees could see your ever smiling face, and you can listen to your voices. सिद्धार्थ जी, मास्क हटा दोगे तो चालान कट जाएगा. अच्छा, okay. So sir, the Avinash bhai, the problem is that you discover the violation only in 1 year, and there cannot be a presumption under the law that I am a habitual violator. So probably this is one of the glaring things which has again crept into these provisions, and with the able leadership of the institute, this thing must also be highlighted and should be flagged through post-date memorandum. Subject to this, there are many things, but owing to the paucity of time, I wish to stop my deliberations here. In case any member has got any query on Finance Bill 2022 direct tax provisions, he may raise his hand.
we can discuss it, and otherwise, so sir, the picture will continue. We'll assemble back once again. Yes, sir. Any other query? Any other observation? So, अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं. Meanwhile, I will request our chairman NIRC Avinash Gupta ji. He is guest of honor of our today's program. I request Avinash ji to say few words. Thank you, Jindal Saab. And I request Siddharth ji as well as all the members. Tomorrow I have a session with the Income Tax Department itself, where all the commissioners and chief commissioners of the Income Tax Department will be there, and people from TPL, Kamlesh Varshne ji, will also join, and Principal CC is also joining tomorrow. So I request all of you to, if you have any suggestions to be made, one way is that we will do it through Institute in a post-budget memorandum. But during the session also, with them, I can raise and flag those issues, and I will be in touch with Siddharth ji after this program also to take his feedback. And any member, if we have any feedback or anything, please let me know so that we can do it. Otherwise, I can only say that it is really very, very technical budget. And in this budget, the amendments which are there are highly technical in nature, and even many of us will have to read again and again these amendments, and then only the real reason of those amendments will come. But nevertheless, we have to do it, and this is one way good to us, that at least this time we have to read a lot for this budget. And I compliment the efforts of CA Association and Ashwini Jindal ji, that lectures तो बहुत होते हैं budget पे, but he have come up with this innovative idea to have a Q&A session on this. And for this, I cannot. For this, I think we cannot have a better speaker than Siddharth ji, my elder brother, who is here. So thank you very much for inviting me and organizing such a nice session. Thank you, Avinash bhai. Siddharth ji, अगर कोई और क्वेश्चन रह गए हैं तो we may take it in 5 minutes. Otherwise, we will have a next session, क्योंकि already ये session हमारा 2.5 घंटे से ऊपर से चल रहा है sir. I think there is a last query from Mr. Arpan Bansal. Sir, if escaped income is below 50 lakh in AY 1415 AY, then still whether they can reopen it. Sir, AY 1415 as per old section 149B got time barred on 31st March 2021. And even if it is exceeding 50 lakh, you are writing below 50 lakh. I am saying even if the escaped income is exceeding 50 lakh, 1415, nothing can be done today under section 148 of the Income Tax Act. वो बात अलग है, गॉड फॉरबिड ऐसे एसएससी के केस में सक्सेस हो जाए और वहां पर 53 ए का 7th 8th 9th ईयर 10th ईयर के अंदर हो सकता है, लेकिन 148 के अंदर नहीं हो सकता सर, आज के दिन नहीं हो सकता. आई होप आई एम क्लियर एंड दिस इज डन. चैट बॉक्स इज एम्प्टी. और वही लास्ट के अंदर सर जो जिंदल साहब हमेशा कहते हैं, एक भी छूटा नहीं तो सुरक्षा चक्र टूटा नहीं. सो ऑल क्वेरीज suitably answered, and I thank Ashwini Jindal ji under his torch bearership for conceiving this amazingly new idea of live question answer so far as the queries pertaining to Finance Bill 2022 is concerned. Actually a very unique idea, because we have many budget lectures, but members many a times they might not intend to open up with their queries. So it was like an interactive platform where we could discuss, we could open our hearts, we could put up the words through our mind. And yes, I mean, considering that the participants exceeded almost at one point of time to 180, 190, I mean, just it's his magic which bound the participants, like honey bees are bound and they get attracted to honey. So it's our own Jalwa, Jindal Sahab. Amazing service to the profession. Thank you very much. And obviously to the technology partners, master brains and voice of chartered accountants. Thank you everyone from the core of my heart, and I leave it back to Ashwini Jindal sir. Thank you. Thank you, Avinash bhai. I am greatly thankful कि आपने ये सेशन इतने बढ़िया तरीके से कंक्लूड किया, और एट ए शॉर्टर नोटिस हमने इसको मेंबरों को बताया, और आप हमें अवेलेबल हो पाए, और मेंबर भी हमारे इतने बिग नंबर में कि 190 मेंबर्स हमारे ज्वाइन कर पाए
ऑन द डे जब गुरु जी के लेक्चर भी अवेलेबल हैं आज की डेट में, इवन दो आपको सुनने के लिए मेंबर इतने उत्सुक थे कि पूरे टाइम पे हमारी अच्छी गैदरिंग हो गई थी और हमारा 2.5 घंटे से ऊपर जो सेशन चला, रादर वी नो दैट एवरीबॉडी इज बिजी in the schedule of tax audit till 15th February. तो आई एम थैंकफुल। मेरे ख्याल में सॉरी मैंने खन्ना जी को बीच में डिस्टर्ब कर दिया, खन्ना जी कुछ बोलना चाहते थे। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट चीफ गेस्ट खन्ना जी हैं, एमएम खन्ना जी, जो हमें स्पेशली यूएसए से ज्वाइन कर रहे हैं, और अविनाश गुप्ता जी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, जिन्होंने हमें मतलब अपना टाइम, कीमती टाइम दिया। हालांकि जे आज इतने बिजी हैं, जब से गिरीश ऊर्जा जी का मतलब अब टाइम नहीं मिल रहा, अब इनका टाइम मिलना भी मुश्किल हो गया। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, खन्ना जी शायद कुछ कह रहे थे सर। मैं सजेशन दे रहा था। एक्चुअली मेरी सजेशन ये है कि इस सेमिनार में जो जितना भी क्वेश्चन रेज हुए हैं, या मेंबर्स आपको और क्वेरीज करते हैं जो कि वो डील करना चाहते हैं, जो अटेंड नहीं कर पाए होंगे, उनको आप टैबुलेट करके यू सेंड आउट ईमेल्स टू देम कि ये जो है सर हमारा यूट्यूब view लिंक है। हमारा अवेलेबल है, आई विल शेयर द यूट्यूब लिंक सर, आप बाद में भी सुन सकते हैं सर। हाँ हाँ, नहीं बट इसके अलावा कोई और क्वेरीज को ये अगर रह गई है किसी की और वो भेजना चाहे बाद में, तो give them time for 4-5 days or 1 week, and then after that you tabulate all these questions and you can send them out. ये तो डिस्कस हो गया, ये तो मिल जाएगा ना। अगर और भी कोई क्वेरीज हो नॉर्मली, तो हम ये करते हैं, ये सजेस्ट करते हैं कि उनको टैबुलेट करके और उनको पॉसिबल आंसर्स भेजने चाहिए। Sometimes a lot of it comes out of those queries also. And I'm happy you have taken me seriously, though I am in a sleepy mood. You know, for me it is night time, it was night time, and for you it is daytime. But वो इंस्टीट्यूट में कहते हैं ना, ये बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट वो है जो कि सोए हुए भी अलर्ट है। So take me seriously that I have been alert. Thank you, sir. Thank you very much. I request Neha Agarwal to kindly conclude the session and propose vote of thanks to our chief guest MM Khanna ji for joining, then Avinash ji, guest of honor, then our Ashok Batra ji, guest speaker in absentia, and Siddharth ji. Thank you so much, Ashwini sir. खन्ना जी सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं है, माय रिकॉर्ड। No issues, sir. There is some technical issue from your side. I would like to thank everybody. First and foremost, our participants who have been with us all this time for 2.5 hours and more, and still there with us. I would like to thank our special chief guest for today, MM Khanna ji, to join us at such a short notice from outside India. Our speakers for today, Batra sir and Siddharth sir, our chairman, NIRC, Avinash Gupta ji, for joining us towards the fag end. Our Vinay Jamwal ji from Jammu, Gaurav Gupta ji, and all the other panelists, as well as other senior members who joined us today. Thank you so much for taking out the time, and it was a wonderful deliberation. Thank you for all the insights and inputs by our panelists and speakers. I would now request the control room to end the session as well as the recording. Thank you so much. एक मिनट रुको, नेहा जी, एक मिनट रुको। खन्ना जी, आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। माय रिगार्ड्स टू यू सर। थैंक यू। पर एक्चुअली क्या मोबाइल पे सब लोग दिखते नहीं है, इसलिए गौरव भाई भी बैठे हैं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया उसे। कोई जब मैं लॉगिन कर रहा था, सिद्धार्थ जी नजर आ रहे थे। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे स्मार्ट सिद्धार्थ जी हैं, वो तो नजर आ ही जाते हैं। Absolutely.